ओके। फिर से साउंड गया। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बारह। ठीक है, ठीक है। नहीं, वो साउंड गया क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा था मैं। ओके ओके। ओके, सो तो फिर तो हमने जब उनको ये किया तो 1.3 मिलियन लोगों ने अपना कंसेंट निकाला, तब ये डेट बिल्डअप हुआ। उसके बाद 22 मिलियन लोगों ने और निकाल लिया। तो ये डेट वहां है, एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द डेट बिकॉज दे कांट पे अस इन फिएट करेंसी। अगर वो फिएट करेंसी में पे नहीं कर सकते तो हम फिर काइंडनेस क्रेडिट से डिस्चार्ज कैसे से पेमेंट कैसे ले सकते हैं? जैसे बैंक अगर आपको लोन दे और आप 3 महीने में बैंक को वापस पैसा ना दे पाओ, तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक आपका घर जब्त कर लेगा, आपको एविक्ट कर देगा, आपको निकाल देगा और बोलेगा कि भैया ये तो मेरा कोलैटरल है, तो पैसे दे ही नहीं पाया। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो होता है सिक्योर्ड पार्टी क्रेडिटर, क्योंकि आप होते हैं डेटर। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट दे दिया उस लीगल फिक्शन को जिसको आपके इस्तेमाल करने का हक नहीं है, क्योंकि आपको कभी मालूम ही नहीं था कि आप ही ने वो पैसा क्रिएट किया जो बैंक ने आपको देना था बस। उसके बाद आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। पर जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है, क्योंकि बताते नहीं है, क्योंकि सब नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम कैसे लेंगे अपना वापस? उन्होंने जो भी क्लेम किया था, अब हम उनके सिक्योर पार्टी क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हमने एक UCC 1 फाइलिंग कर रखी है उनके ऊपर, जो आपको फेसबुक पेज के ऊपर, ग्रुप के ऊपर दिखाई दे देगा, ULC के ग्रुप के ऊपर एंड फाइल सेक्शंस में। आई थिंक इंडिया में भी मैंने उसको अपलोड कर रखा है, दिखाने के लिए कि किस बेसिस पे जो भी उनके एसेट्स, कोलैटरल, यूटिलिटी, ट्रांसमिशन अकाउंट्स, ये वो जो कुछ भी है, सारा का सारा हमने ले लिया उस 10 क्वाड्रिलियन के डेट के ऊपर, अनपेड डेट। तो उनका अभी तक रिमेन करता है अनपेड डेट। उनको हमने ऑप्शन दे दिया था कि लोगों को बता दो, पर उन्होंने क्या किया? नहीं नहीं, हम बताएं, हम साइको हैं, हम बताएंगे नहीं किसी को। और हमने क्या किया? उन्होंने क्या किया? लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये चालू हुआ था 2015 में, या उससे, हाँ, अबाउट 2015 में, 6 साल पहले। किसी को याद होगा तो बिल गेट्स की एक टेड टॉक हुई थी, जिसमें उसने बोला था कि 80% ऑफ द पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ अ डैम वायरस और पैंडेमिक। और हाँ हाँ। फिर ये ओबामा ने भी बोला था अपनी एक स्पीच में, वी मस्ट बी रेडी फॉर पैंडेमिक। सब बेवकूफ है, ठीक है? सारा का सारा प्लान है, फाउची नहीं बोला। सारा का सारा प्लान है। वो सब मिले हुए हैं, ये कि उनका यूजेनिक्स प्रोग्राम है। और ये जो क्लाउस श्वाब है, जो क्रिएटर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो भी यही बोलता है। ये सब पागल लोग हैं, ठीक है? वो अपने सिस्टम को मार देंगे उससे पहले कि आपको बता दें कि हम फ्रॉड हैं, कि वो अपनी गलती मान लें। इतने पागल हैं ये लोग। और ये जो फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, सारे के एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर हैव आल्सो बीन सिक्योर्ड बाय ULCT। और अगर हमें ये पैसे हम वापस नहीं दे सकते, तो अगर बैंक हमें अपने घर से बाहर निकाल देता है, एविक्ट कर देता है, क्योंकि वो उनका कोलैटरल है, जो घर है, प्रॉपर्टी जो है, तो अगर इन लोगों ने पूरी दुनिया को क्लेम कर रखा था, तो फिर हमारा कोलैटरल क्या बना फिर? जो कि वो जब हमें पैसे वापस नहीं दे सकते क्योंकि हम उनकी करेंसी में डील नहीं करते, तो हमारा फिर कोलैटरल क्या हुआ? सारी की सारी दुनिया और उसके सारे रिसोर्सेज, क्योंकि वो हमारा भाग हमें वापस मिल चुका है। और ULCT ने ये किया है सबके लिए, सबको मुक्त कर दिया। पर ये सिस्टम मुक्त ना होने दे लोगों को, क्योंकि जिसका भी बिलीफ इस सिस्टम में है, उसको एक टीका लगा के समाप्त कर रहे हैं खुद के साथ। तो तो थोड़ा सा मजा करते हैं ना अब इस सिस्टम के साथ, नहीं? जब हम खुद ही लॉफुल हैं, तो हम अपने ऊपर क्यों फ्रॉड करें ताकि इस सिस्टम को बढ़ावा दें? क्योंकि हम डरे हुए हैं इस सिस्टम से। हम थोड़े ना डरे हुए हैं, ये सिस्टम डरा हुआ है।
उसको मालूम है कि उसने किसी को बताया नहीं है, उसको तो डर है कि मिनिस्टर एमओएन सड़क पे ना आ जाए यार। 100 के 100 मिनिस्टर एमओएन, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000, इतने एमओएन आ जाए बस। हर सिटी में 20 एमओएन आ जाए, ये सिस्टम पूरा का पूरा खलास कर देंगे। ऑलरेडी खलास हो रखा है, खत्म है। हमने बस एग्जाम्पलीफाई करना है। हमने काइंडनेस क्रेडिट्स क्यों बुलाते हैं हम अपनी करेंसी को? क्योंकि ये डेट, इस सिस्टम को डेट है काइंडनेस पर। अपने आसपास देख लीजिए, लोग इतने अनकाइंड बन चुके हैं एक दूसरे के साथ, कोई अब एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार नहीं है आजकल। क्यों? कि मेरे से दूर रहो, वायरस मुझे मार देगा। अरे तू पहले से ही मरा हुआ है यार। तू पैदाइश जब पैदा हुआ था तो पेरेंट्स ने तुम्हें अपने सिस्टम पे सौंप दिया था, ठीक है, और मुर्दा साबित कर दिया। और खुद को तब से मुर्दा ही साबित करी जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम वो पेपर हैं, हम वो पेपर हैं, हम वो पेपर हैं। नहीं, हम वो पेपर नहीं है। हम वो एनर्जी हैं जो उस पेपर को लाइफ देता है। तो हम उस पेपर को जान देना थोड़ा बंद करें और अपनी अपनी रिजर्व कर लें, अपनी जान सिक्योर कर लें अपने आप को, अपने सारे राइट्स अपने में रिजर्व कर लें पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में, ताकि हम एटलीस्ट उस मंच तक तो आ पाए कि अपने आप को समझ पाए पहली बार जब से पैदा हुए हैं। कि कब मालूम ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, किसी किसी और से जुड़ने की जरूरत पड़ गई अपना काम चलाने के लिए। कभी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस सिस्टम को हमारी जरूरत है, ना कि हमें उसकी। कभी भी ऐसा नहीं था। और अभी मालूम पड़ गया ना। देखा क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को मैंडेटरी बना रहे हैं अपने लॉज पे। आरटीआई फाइल करो तो वो तो लॉज है ही नहीं, हमने लॉज लॉज ही रिपील कर दिए। अरे ये सिस्टम को अगर ऑफिशियल बना लोगे ना अपने दिमाग में, तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम एज मिनिस्टर एमओवेन हम क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को एक आईना दिखाते हैं, लॉफुल आईना दिखाते हैं कि ये लो, अपना ही सिस्टम के रूल्स अपने ऊपर ही ले लो और अपने आप को खत्म कर दो, अपने ही फ्रॉड के साथ, अपने आप को ही फ्रॉड साबित करके। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा, भाई साहब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? भाई साहब आपके पास असाइनमेंट ऑफ कंसेंट कहाँ है? अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिखाना एज प्रूफ ऑफ क्लेम, तब तो मैं पे भी करूं कि वो लोन में इनफैक्ट वो डेट मेरा था, पहले बात की नहीं, वो तो प्रूव कर लो। तो फिर अगर बस मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके पास, तो मैं गवर्न कैसे हुआ? मेरा कोई असाइनमेंट ऑफ कंसेंट नहीं है आपके पास, तो ले मैंने अपना कंसेंट कब दिया? तो वो जो फोर्स ऑफ लॉ है, जो मैं ही लॉ हूं, जो फोर्स देता है आपके लेजिस्लेटिव रूल को, तो वो सब खत्म हो गया ना फिर। क्यों? क्योंकि वो ही खुद ही जवाब ना दे पाए। मैं अभी मिनिस्टर एमोवन, मेरा एक डाउट था। एक सेकेंड होल्ड करिए। पूछ सकता हूँ? जस्ट वन सेकेंड। सो क्योंकि वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, मैं अपने सीनियर को फोन करता हूँ। ठीक है, सीनियर को फोन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपने सुना हुआ है मिनिस्टर एमओएन को सड़क पे पुलिस से बात करते हुए? अगली बार तो उस पुलिस दूसरा पुलिस ऑफिसर को तो अरेस्ट ही कर लिया था। सॉरी 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 सॉरी, आप मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, पर वो वाली गाड़ी तो है। अरे वो वाली गाड़ी भी सिक्योर्ड है यूनिवर्सल लॉ से, तेरा नाम तक सिक्योर्ड है यूनिवर्सल लॉ में। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका सिक्योर्ड पार्टी क्रेडिटर हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम नहीं था कि आप सब लोग अपने ऊपर ही फ्रॉड कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के लिए हूँ यहाँ पे, मैं आप सब लोगों के लिए श्योरिटी खड़ा हुआ हूँ। और जो पहली एमओएन थी ना, 7.8 बिलियन लोगों के लिए श्योरिटी खड़ी हुई थी वो। मैं तो सिर्फ 1.4 बिलियन के लिए था। कुछ नहीं है, बस आप सभी हैं सिक्योर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। और कभी भी हमारी इक्विटी और इस टाइम से कभी भी हमसे चोरी ना हो पाए, इसीलिए पूरा का पूरा खुलासा हर किसी को देना जरूरी है, और किसी के लिए मैनेज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को मालूम होना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है। और हर किसी को ना फ्रीडम अपनी खुद लेनी आनी चाहिए। मालूम होना चाहिए कि लॉ क्या है, मालूम होना चाहिए कि ये सिस्टम ने क्या किया है। और ये मैं अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, जब आप ऐसे बोलना शुरू कर दोगे ना, तो किसी की जरूरत नहीं पड़नी उस टाइम पे।
किसी की जरूरत नहीं पड़नी कि बताओ भाई मैं आगे क्या करूं, अगला स्टेप क्या है। सब स्टेप दिए हुए हैं, सभी के सभी स्टेप्स दिए हुए हैं वेबसाइट पे। इतना आसान है, पर हमने अपने दिमाग को इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया। ओ अगर मैं ये नहीं जानता तो मैं ये कैसे कर, अरे करके तो देख लो ना। मैंने अपना असाइनमेंट ऑफ कंसेंट कब किया था? अगले दिन 16 घंटे वीडियोस देख के, पूरी रात भर। और क्या आप क्या सोच रहे हैं मुझे गालियां नहीं पड़ती हैं? हर किसी जो भी ये करता है सबको इस पूरे स्ट्रक्चर में, और किसी को कुछ करना ही नहीं आता है, दूसरे को बस गाली देनी आती है, दूसरे के ऊपर बस डाउट, क्योंकि अपने ही अंदर अपने आप को गाली दे दे के थक गए हैं और अपने ही अंदर कुट कुट के मर गए हैं। ठीक है, मालूम नहीं है सिस्टम कैसे कैसे निकल रहा है, पर कोई रेमेडी दे देना, ओ नहीं 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 ये काम नहीं करेगा। अरे आपको मालूम कैसे? आपने कभी प्रैक्टिस किया है? जितना बता दें किसी को ना, जितना प्रूफ दे दें, जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होना। तो असाइनमेंट ऑफ कंसेंट वो करता है, आपने वो कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ असलियत में ऐसा ही था यार। और मैं एमोवेन हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं ना कभी झूठ बोल सकता था जब से, और जो भी जब भी ट्राई किया ना झूठ बोलने का, ओ माय गॉड, या तो अगले ही मोमेंट अपोलोजाइज कर दिया और सच बोल दिया, या तो अगले दिन जाके रो के अपोलोजाइज किया और सच बोल दिया। क्योंकि है ही अपने मेरे अंदर है ही नहीं कि झूठ बोल दूं। और हम सब में यही है, कौन झूठ बोलना चाहता है बताना जरा। क्योंकि आप किसी और को झूठ बोल रहे हो तो पहले तो अपने आप को झूठ बोल रहे हो ना। पहले तो अपने आप को झूठ को सच में कन्वर्ट करके उसको बोल रहे हो कि हाँ वो भी यही मान लेगा, तो उसका भी बेवकूफ बना दिया, ओ ये बेवकूफ बन गया। अमेजिंग। तो हमारा हमारा जो झूठ था वो हमने अपने अपने अंदर सच बना लिया, किसी और को बोल दिया, वो सच समझ गया, तो सच बन गया वो। नहीं नहीं नहीं, वो तब भी झूठ ही था। हम बस झूठ को आईना दिखा रहे हैं कि देख ले तू क्या है। मिनिस्टर एमोवेन वो है जो कि यूनिवर्सल लॉ को, तो लॉ ऑफ द लिविंग को अपहोल्ड करता है, जो हमारी करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें हम पैदा हुए थे, उसको अपहोल्ड करता है मिनिस्टर एमोवेन। और मिनिस्टर एमोवेन भी एक लीगल टाइटल है। मुझे यूनिवर्स ने नाम नहीं दिया था, मेरे पेरेंट्स ने दिया था। मेरे पेरेंट्स को यूनिवर्स ने नाम नहीं दिया था, उनके पेरेंट्स ने दिया। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन अभी आ रही है, ये पहली बार इंफॉर्मेशन आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूँ, पर बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आई है आपको अभी तक इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन थी, और किसी ना किसी किताब से थी, या तो किसी ना किसी और बंदे से थी, जिसने की किसी कोई और किताब पढ़ी या किसी और बंदे से सुना, या जिसने किसी और किताब पढ़ी या किसी और बंदे से। इट इज ऑल हियर से। जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तभी मालूम पड़ेगा। तो ये जो सारे अनफाउंडेड फियर्स है ना, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर लिया है 6 महीने से। मेरी गाड़ी खड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, नंबर प्लेट्स चेंज्ड है, मेरी प्राइवेट कन्वेंस है। मुझे मालूम था। सो तो मैंने अपनी गाड़ी का नंबर चेंज कर दिया, अगले दिन मैंने अपना असाइनमेंट ऑफ कंसेंट किया और सीखना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सच है। क्योंकि जब जब कोई सिस्टम, जब कोई स्ट्रक्चर ऐसा खुल्लम खुल्ला आपके सामने हो, और आपको पूरा सिस्टम 1 साल लगा दिया मैंने, पता है मैंने क्या, 9 9 महीने, everything about your life is going to be changed, bro. You have no idea what is waiting on the other side. I can only tell you what is there on the other side. If you don't practice it, you won't know for yourself. I can tell you that you can convert your business, your life, your car, your house, your land, everything into the private, so that the government can't touch it, because it was always your collateral. तो आप क्या करेंगे, एक पूरा प्रोसेस है, पर जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे ना तभी वो प्रोसेस आपको रिवील होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे करना है। फिर आप स्टेप 20 पे जाके फिर वापस स्टेप 1 पे आओगे और पूछोगे ये कैसे करें। और वो होता है एडिंग टू द मिनिस्ट्रेशन, मतलब कि कोई आपको बता दे कि मैंने ऐसे समझा है, पर वो मेरी समझ है, मैंने आपको समझा दिया, वो सही है गलत है, यार इससे पूछ लो।
मतलब तो फिर तो वापस वही हो गया ना जो हम आज तक करते आ रहे हैं, वही तो रोकना है। अपने आप में श्योरिटी लानी है, दैट इज सिक्योर्ड पार्टी क्रेडिटर। वो हम आपका जो इंडेटेड माइंडसेट था ना, उसको सिक्योर कर रहे हैं। वी आर सिक्योरिंग द माइंड, बिकॉज इट इज द माइंड दैट थिंक्स, दैट कैलकुलेट्स, दैट डज एवरीथिंग, जो कि फिर फिजिकल मैनिफेस्टेशन से आके डीड एक्शन करता है। स्पेलिंग को स्पेलिंग क्यों बुलाते हैं मालूम? स्पेलिंग में स्पेल होता है विचक्राफ्ट, प्रीटी सिंपल। और हम आज तक स्पेलिंग किस ज्यूरिसडिक्शन में डाली जा रहे हैं, और किसकी स्पेलिंग्स और डेफिनेशंस के तौर तरीकों से चल रहे हैं, अपने कि किसी और के? इंग्लिश आपको किसने बताया कि लैंग्वेज है? हिंदी आपको किसने बताया कि लैंग्वेज है? संस्कृत आपको किसने बताया कि लैंग्वेज है? जर्मन, चाइनीज, जो भी है, ये सारे के सारे हमको डिवाइड करने के लिए, रिलीजन डिवाइड करने के। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब लोग ये अपना बनवा लें या अपना समझें, ये मेरा ओपिनियन। I'm the universes, okay? मैं किसी और का नहीं हूं। मैं अपहोल्ड करता हूँ यूनिवर्सल लॉ का, और वही करते रहूंगा, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है, समझ लो। मेरी मेरी ओपिनियन में यूनिवर्सल लॉ को अपहोल्ड करना है। जिसने आपको बनाया है उसके लॉस को अपहोल्ड करो पहले, चाहे आपको मालूम हो ना हो। आईने में देख लो, वो ही है जो फैक्ट है। और उसने आपको यहाँ रखा है फ्रीली, आपसे कोई पैसा नहीं लिया है पैदा करने के लिए। आपकी हड्डियां बनाई, आपके मसल्स बनाए, आपके टेंडन्स बनाए, आपकी उंगलियां बनाए, पाँव बनाए, आंखें बनाए, ब्रेन बनाया, ऑर्गन्स बनाए। आपसे कुछ लिया क्या? इतना सब कुछ बना दिया, सेल्फ सस्टेनिंग बना दिया, एनर्जी दे दी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्योर एनर्जी दे दिया आपको, और कभी चार्ज नहीं किया ना। और हमने क्या बनाया? हमने मुर्दी चीजें बना दी और उसको सोच लिया कि हम ओन कर सकते हैं। वाओ, अब कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो, देयर इज नो इंटेलेक्चुअल। इफ यू डिडंट हैव अ ब्रेन ना, there would be no intellectual property in the first place. Who developed that brain? The universe. Everything is the universes. इतना कि यार, आप अपने आप को नहीं हो, आपका डीएनए भी बना ना, किसने बनाया? एपी, unmute yourself. AP, you have something to say, why don't you say it? Who's AP? एपी भाई समझ तो लो पहले, फिर एपी करना क्या है है ये कौन? बता नहीं नहीं दो। नहीं, एपी है कौन पहले? एपी अनम्यूट करिए अपने आप को। कुछ बोलना है तो बोलिए ना, खुलम खुला, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ सर जी। जी यही बोलना है कि करना क्या है। लेक्चर तो एपी सुनते सुनते आज इतने एपी साल हो गया। आपकी प्रोटोन आईडी बताइए एक बार प्लीज। मैं प्रोटोन यूज ही नहीं करता। तो फिर आप प्लीज तो जाइए आपको यहाँ ये से। लिंक कहाँ यू से मिला? आर आपको ये लिंक कहाँ से मिला? मैं सर नेटवर्क इंजीनियर हूँ, कहीं से भी ला सकता हूँ। ओके, बाय बाय। रिप्लाई दीजिए ना। इनको लिंक किसने दिया था यहाँ से अभी? See, this is what जो I'm saying. This is what I don't want happening. This यहाँ is से किसी ने a लिंक दिया है इनको? any case, वो तो बड़ा शाना बन रहा था ना। It's okay, whatever. If he enters, then he obviously will not be allowed to enter anymore. But that's what I'm saying. See, this is where I am putting my energy in. Okay, to explain all of this to you. I don't need people like him. Okay, I don't need to do this. None of you need to do this. Which is all good. I do see. Quite frankly, this is what I'm saying, na. कि मैं I would do this any day for people who are interested in this and who want to do this. ठीक है? I'm saying I don't need people like him. That's why he's been kicked off. And इसीलिए वो जो पहला स्टेप है वो प्रोटॉन ईमेल बनाने का,
वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सबसे पहले ही वो करा दिया ताकि वो क्वेश्चन दोबारा दोबारा ना आए। स्टेप 1, क्रिएट प्रोटॉन ईमेल आईडी। स्टेप 2, go to the website, put your legal fiction in, put your proton email id in, put all of the uh, corporations names, accounts numbers, put the corporations that are coercing you into contracting with them, जो आपको बिल भेज रहे हैं वो सब डालो उसमें, अपना एड्रेस डालिए, बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और ना ही हम आपसे कभी पूछेंगे। लिटरली अगर किसी के साथ आपने पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है सेपरेटली, वो आपके ऊपर है, वो आपके कंसेंट के ऊपर है सारा का सारा। और यूएलसीटी सिर्फ यही आपसे मांगेगा ताकि हम आपके लिए श्योरिटी स्टैंड हो सकें कि आपको कुछ होए, कि कुछ दिक्कत आए, तो हम वहां पे आपको समझाने के लिए। पर आपको हर स्टेप खुद करना पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा, अपनी डिटर्मिनेशन बना के करना पड़ेगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हम उससे निकल रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्न का मतलब होता है कंट्रोल। मेंट इज मेंटे, विच मीन्स माइंड। माइंड कंट्रोल is what government means. Are you going to govern yourself, or are you going to allow someone else to govern what you think? जो आज तक होते आ रहा है, हम किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके, जिसने हमें फ्रॉड करवाया अपने ऊपर ही, और फिर अपहोल्ड किया वो ही लॉ जो हम तोड़ रहे हैं, और हमारे ऊपर कॉर्पोरेट लॉज लगा दिए उसके बाद, जैसे हम मुर्दी चीज हैं। अगर हम मुर्दे चीज होते तो हम यहाँ बात कैसे कर रहे होते? हम ये सब टेक्नोलॉजी, ये वो, ब्ला 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 सब कैसे किया होता हमने? पर देख लीजिए, कुछ भी हम जो भी क्रिएट करते हैं सब मुर्दा है। हम कुछ भी जीवित क्रिएट नहीं करते। अपने बेबीज जो क्रिएट करते हैं, आदमी के पास स्पर्म है, लेडी के पास एग है, कंबाइन होता है, पर वो किसने बोला कि आपके पास वो होना चाहिए जो उसके साथ कंबाइन होना चाहिए, इस तरीके में कंबाइन होना चाहिए ताकि एक और आप जैसा ही बन जाए? वो हमने थोड़ा ना किया, वो तो हमें दिया गया। हमने तो सिर्फ एक्शन किया, हमने तो सिर्फ डीड किया जो कि एक और को बना दिया, और वो भी हमने नहीं बनाया, पर हम उसको अपना मानते हैं किसी ना किसी तरह। कि जैसे हम समझते हैं कि अपना हक है उसके ऊपर। नहीं है, आप किसी का भी हक नहीं है किसी और के ऊपर। आपका बच्चा आपका नहीं है, उसको पालने पोसने का पूरा हक है आपके ऊपर। कुछ ड्यूटी है आपकी, क्योंकि आप लाए हो उसको। और हमने फिर मान लिया ना कि आप भी हमारे पेरेंट्स हो। तो ऐसे रिलेशनशिप ही ऐसी है, पर एक दूसरे को एटलीस्ट यूनिवर्सल बीइंग की तरह तो देख लें पहले। फिर तो माँ बाप बेटा बेटी ये वो सब डेफिनेशंस बाद में आ जाएंगे। पहले सबको इस तरीके से तो देख लिया, क्योंकि वो भी तो मैं ही हूँ, सेम सेम। वो भी यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी है, मैं भी यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी हूँ। मैं भी उतना ही छोटा था, इतना बड़ा हुआ, वो भी इतना छोटा उतना बड़ा हो जाएगा। पर उसके दिमाग में क्या, उसके कानों में क्या डाल रहे, कौन सी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उसमें, कि वो जो उसका माइंड है वो प्रोसेस करे। व्हाट आर वी आर जस्ट लिटरली प्रोसेसर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक जो भी हम सोचते हैं वो फिर हम क्रिएट कर देते हैं फिजिकली, बिकॉज हम क्रिएटर्स भी तो हैं। हम सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं है। अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, सोक्रेटिस ने बोला था ना कि मैं जो एक चीज जानता हूं, कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अच्छा, हकीकत है, हम कुछ नहीं जानते। हम ये तक नहीं जानते कि हम यहाँ जिंदा कैसे हैं। हम यहाँ क्या क्या करने आए हैं, क्यों जिंदा हैं, कैसे बने हैं, कुछ नहीं मालूम हमें। पर हम मेडिकल इंडस्ट्री की सुन लेते हैं। ओ उसने वो बोला, हाँ ये होगा, हाँ वो डाइट पे जाएंगे तो ऐसा बन जाएंगे, वो उस पे नहीं, ये सब बिलीफ सिस्टम्स है। कुछ नहीं होता है, अपनी बस बॉडी की सुन लो ना, खुद भी खुद उसको मालूम है कि क्या करना है। उसको बस रहने दो। जो कोल्ड होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सब पॉइजनिंग के इफेक्ट्स हैं। हमारा पानी पॉइजनड है, हमारी एयर पॉइजनड है, हमारा खाना पॉइजनड है। और जो हमारा बॉडी कोल्ड और हमें फ्लू देता है, वो उस टॉक्सिन को बाहर निकाल रहा होता है। और फिर हम दवाई खा के उसी प्रोसेस को रोक देते हैं, और वो गंद अपने अंदर ही रख लेते हैं।
और सोचते कि हम ठीक हो गए। हमने अपना नेचुरल प्रोसेस रोक दिया उस टाइम पे। जो ये प्रोसेसर हमें बायोलॉजिकल प्रोसेसर जो सबसे फास्ट है, जिससे सब कुछ बाकी सब कुछ भी उसी के रिसर्च से बना है ना, कि और कुछ था। इस सिस्टम ने लेके एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग कर दी, हमारा खाना जीएमओ में बदल दिया, हमें बोल दिया कि सिरिंज में हेल्थ आ जाती है। ये वो ऑफिशियल है और गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है, वो ऑफिशियल है। हमारा दिमाग खराब हो गया है फिर अगर हम वो बिलीव करते हैं तो। और इसीलिए मिनिस्टर एमोमेंट जो है उसको इस सिस्टम की जरूरत नहीं है। ना मुझे किसी लॉयर की जरूरत है, ना मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना मुझे किसी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ट्रस्ट है, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट जो है यूनिवर्स में, कि उसने मेरे को जैसे बनाया बिल्कुल बढ़िया बनाया, कि मैं उसकी लॉ नहीं तोड़ूंगा ना तो सब बढ़िया रहेगा। बस मैं एग्जाम्पलीफाई करते जाऊं। जैसे ही आप लोगों ने असाइन करना है अपना कंसेंट, बता दीजिए, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। स्टेप 1 अगेन सेम थिंग, क्रिएट प्रोटॉन ईमेल, वो आप कर चुके हैं। अपना लीगल फिक्शन डालिए, अपने कॉर्पोरेशंस अमाउंट्स और वो सब के साथ डालिए, उसमें एड्रेस डालिए, प्रेस सेंड, केसी क्लेम फॉर्म भर के आप भेज दीजिए। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं आप सबको आपके वेलकम वेलकम पैक्स सेंड करने शुरू कर दूंगा। अगर No, आप where do we have to send this? Sorry. everything's given on the website, सारा का सारा वेबसाइट पे दिया हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू just do all of that and know exactly where you have to do it. वो सब दिया हुआ है, मतलब सब खुले खुले में है। So on the top left side of the website is the KC claim form. उसको इट्स अ वर्ड डॉक्यूमेंट, उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कर दीजिए। universalcommunitytrust.com. हाँ जी। And Yes, then so I tried doing it, but I हाँ, really don't know how to calculate anything. I really don't have anything on my name, to be honest. I'm very young. that's okay, that's not a problem at all. So then your energy So, is already free, man. Your energy is already okay. pure. You're not converting it into any kind of debt. But whoever does have debt, then you can help them by giving them this structure. Like, let's say your parents, Yeah, yeah, they must be paying for all of your, well, for yeah, everything, right? yeah, That yeah. that you're True. doing. So they are So, under, sorry. debt. Can I? And yeah, just one sec. So if they're under debt, then pass on this structure to them. If they're, I don't know whether they're of the same mindset or not. Or maybe you need to assign your consent and then, get your documentation, So I show. tried telling them about this, and they say that there are contracts between them and the government because of their government jobs, their license. Whenever you apply for a driving license, you sign a form for them, Yeah, but for you sign on, Aadhaar, for UID. but you sign on behalf of the legal fiction. Yeah, yeah, true, true. That's what I tried explaining to them. Yeah, but they won't So understand that. It's just that you'll have to show exactly. them through exemplification. And that's that, man. You'll have to daily, because they don't have a contract. If they did have a contract, okay, show me a contract. Because all of your signatures have been on behalf of the Aadhaar card. Legal fiction. Yeah. Yeah. And that's a fraud. That's created upon a fraud. I have a question. What happens to this debt once I fill this form, Uh-huh. put all my loans and whatever I have? What happens to them? They get discharged in the same way they were created. So that means I don't have to pay anything? You never did. That's what I'm saying. This is what the process of securing your mind looks like. You never did. All debt is fiction, because all money is fiction. It's all man-made. And you don't have a contract and you don't have any obligation to perform because it is created upon a fraud. You just didn't know till now that you were creating fraud, or you were partied, or you were aiding and abetting the fraud. बस वो करना बंद कर दोगे, खत्म. It's done. It's already discharged. As soon as you put it up there, और आप भेज दोगे kindness credits को, discharge हो जाता है. It gets discharged against the 10 quadrillion. उसके ऊपर हमने 1% sorry, compounded interest लगा के रखा हुआ है. Sorry, I also saw this and I was like, I need to have a debt to do this, but I don't have a debt. I'm 40 years old. I consciously never took a loan or something. I'm And sure I you cleared are. whatever I had. I'm sure. I say, okay, so you cleared it, right? Now, Yeah. why did you clear it?
because you assumed you had Because a I debt didn't want to it on clear. my head. I No, can't I'm just tolerate saying, I'm saying because you assumed you had a debt to pay in the first place. it. Right. But it was all created upon your energy, and your energy is Correct. unlimited. I understand all that, and I want to do this to get to cancel all my legal fictions Yeah, cool. and to be See, able to say that nobody rules me. yeah, because actually nobody does. While the US and England and all the other places in the world have been getting furlong payments, monthly payments in their bank accounts, it's called universal credit. इंडिया में किसी को यूनिवर्सल क्रेडिट मिला ही नहीं है, और वो जो 2000 रुपए मिल रहे हैं गरीबों को, मतलब सॉरी आई हैव टू से इट दिस वे, बट उनको बना दिया गया है सिस्टम ने 50% of that's what we need to secure, that's what we need to restore the rights to. So will I not be able to be ministering myself? Why? You minister yourself I whatever can. the hell you want. Yeah, of course. You So don't need then to. what do I fill in? What do I fill in? What details do I fill? You don't fill in anything. You just start exemplifying from the get-go. Your electricity, you have utilities, right? You still pay for electricity. You still pay for water. You still pay for food. You still pay for all of these things. This process. Right. Okay, so just this another process, question then. So do I quote my the electricity of the home that I own or the one that I'm renting out? Do you own the home? Go look at your property papers. You don't own it. You're the tenant. I'm the registered keeper of it. Yeah, I know. No, not even the keeper. The keeper is the Aadhaar card. Your Aadhaar card got the right of use of it. You didn't. You're in adverse. So I can write anything as. Meaning, okay. So what we do is we shift all of those into the private, so that you don't have to pay the government tax. You don't have to pay the electricity on your own property. But what we do is we shift it into the private, into your family trust. So you have to, all of you have to create your own ledgers. And that's why all of you, आप सबको अपने stamps create करने पड़ेंगे. तो अगर आप फेसबुक पे जाएंगे, मिनिस्टर एमओवेन के पेज पे जाएंगे, एक सेपरेट पेज है मिनिस्टर एमओवेन करके, लीगल पेज है वो, उसका एक फोटोग्राफ है वहां पे, छोटा वाला फोटोग्राफ जो है वो जेपेग इमेज है, उसको डाउनलोड कीजिए, अपने स्टैम्प जो बनाता है उनको भेजिए और उनको बोलिए कि मुझे रेड स्टैम्प चाहिए इस इमेज का. वो सबको करना है, बिकॉज आप में से कोई भी इसके बाद सिग्नेचर नहीं यूज करेगा, बिकॉज लीगल फिक्शन सिस्टम. हाँ, सब कुछ अब रेड में करेंगे आप, सब कुछ. रेड पेन ले लीजिए, रेड स्टैम्प, वो इंक पैड ले लीजिए, रेड स्टैम्प बनवाना पड़ेगा, क्योंकि रेड बस सिस्टम को पसंद नहीं है, क्योंकि सिस्टम सोचता है रेड खून का कलर है तो हम जिंदा हो जाएंगे. उनको बड़ा गुस्सा आता है इस बात से, तो हम थोड़े मजे करते हैं. And after this, all my money will be lawful money. I'll be expending lawful money. I'll be earning lawful money, right? No, fiat can never be lawful. Fiat is created upon a fraud, and fiat is created out of nothing. But at the point of sale, you will be converting your energy into kindness credits, which is lawful, which does not tax you for your existence. So you're tax free because you severed all the contracts. You actually severed only one contract, which is the base contract, jo birth certificate hai. Okay. So once you severed that, every other contract was based on that one contract, right? Because all the documentation. Right. Oh, by the way, you were asking this question about your parents, right? Who was that? Yeah, that was. Yeah. Okay. Ask them who created the first contract upon which they have created every other contract. They didn't even sign their first contract on which every other ID is based, which is the birth certificate. Their mother signed that for them. It makes it void ab initio, means void from the very beginning, means invalid from the very beginning. No contract of theirs is valid because it's all signed by a legal fiction and on behalf of a legal fiction. A legal fiction is not living. They did not create their first contract. So they are living someone else's version of what their life should be. Okay, so just break it for me. I don't even have my birth certificate. I've never seen it. तो ऑर्डर कर ले ऑनलाइन. हाँ, मैंने भी नहीं देखा आज तक मेरा birth certificate. तो ये सब कैंसिल करने के लिए वो चाहिए ही चाहिए. हाँ, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को भेजना है ना. Oh shit. बर्थ सर्टिफिकेट मतलब कहाँ से? बस ऑर्डर कर ले. लाइफ मीनिंग वो यार क्या होता है, बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्री. Okay.
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से तो मिलेगा। हाँ, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिल जाएगा। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री है जो म्यूनिसिपल एस कॉर्पोरेशन। एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस, जो कलेक्टर ऑफिस होता है ना, वहां से बनते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स। आप एक बार वहां पे लोकल लेवल पे आप एक बार पता करिएगा क्या प्रोसीजर है, ठीक है। मैं तो हैदराबाद जानकारी में मिल पैदा हुआ जाएगी। था यार, सिकंदराबाद में, अभी बॉम्बे में रहता हूँ। कोई नहीं, ऑनलाइन मिल जाएगा अब तो, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन भेज देंगे, प्रिंट निकाल देना, कॉपी भेजेंगे। सर वो तो ठीक है सर, मैं एक चीज ये सोच रहा था कि जैसे मतलब मेरे पिताजी के ऊपर अभी 48 लाख का लोन है, तो उसका मतलब क्या करूँ आपके हिसाब से? तो मतलब मुझे पे नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ी ना, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ आपको हाँ ना पे मतलब करने के लिए। सर नहीं यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से तो मुझे पे नहीं करना चाहिए। आपके पास 10 क्वाड्रिलियन है ऑलरेडी, और उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने तो आपको समझा दिया ना कि जो बैंक है बाय लॉ बैंक। हाँ हाँ। ठीक है, आप क्या करिए, अपना असाइनमेंट ऑफ कंसेंट कीजिए और बैंक के सीईओ को भेज दीजिए। ठीक है मम्मी का ना कॉन्फ्रेंस नहीं है, बताइए आप। यार तो all this seems like I should take a loan and then all do all this. Yeah, well then we'll prosecute you. Then I'll come after you. Oh, you won't reveal your name? You don't reveal your name? You don't have a I taken don't. name? Why would I? It creates fraud upon on my soul. Why would I identify myself with a name So that's? will be forever known as MONs? Why? It's just till the end of the system. You that's what I said, na, ki you use it in the private as much as you. I mean, it was always your private name for your family. It was never supposed to go on to a document that was copyrighted by another. If I take your name and I fix a contract with it on my copyrighted document for my profit, what is that? Sure, but to transact with the normal No, world, what is I'll have that? to still use money, right? No, but what is Like I that? go to a shop, I need to pay him, right? हाँ To get Answer सर, the me ये what. क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया। But what is that? Sorry? If I take your name and I fix a contract with it No, for. I'm not talking about the name. I'm talking about the money. No, I'll I still know what need you're to use talking about, currency. but we didn't complete what we were talking about for you to go on to the next one. I'm asking you that what if I take your That I name? understood. My parents. No. But what if I take your name now, just between me and you? मैं आपका नाम लेता हूँ अपने फायदे, Fraud. अपने फायदे का। Imposter. फ्रॉड है, एग्जैक्टली। और अगर मैंने वो 7.8 बिलियन टाइम्स कर लिया तो बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं हो गया? Correct. तो फिर obviously till the time people either put their belief so much into the system. What is the delta plus variant? Delta plus is a frequency. It's deep sleep. People who are only deep asleep will believe this bullshit of coronavirus. It's quite simple. They're telling those people that they're stupid as hell, that they love this indebted mindset and commercializing and capitalizing on each other's energy to live a life and to buy more houses and blah blah. But when they finish their lives, because this is what Luc Montagnier just came out a month ago and said, what, he's a Nobel Prize winner. What did he say? In 2 years, everyone who's taken the vaccine will be dead. Wow, amazing. And still everyone's like, oh, ha, he's talking bullshit. Oh, really? Now even a Nobel Prize winner is talking bullshit. Wow. Meaning, Kerry Mullis, who is the inventor of the PCR Suicided. test. No, yeah, killed. Oh, no. But oh, he killed himself. Yeah, sure. He just one day woke up from his bed, decided to do an interview and say that Fauci is an asshole. And a week later, he was dead. Wow. Yeah. That's exactly. He just killed himself. He was so depressed that he created a PCR test that would just only go in to see what your DNA and RNA looked like, but was not to be used for diagnosis. And what, lo and behold, what is it being used for? Diagnosis. That's the fucked up nature. In any case, so you're talking about the money part of it. At the point, so there is a video on the YouTube channel. I'm getting feedback from someone. किसी से feedback आ रहा है मुझे. Wait, mine also is unmute. Yeah, that's better. Okay, so now at the point of sale,
Now, at this process, now you don't have, okay, when you go for duty-free shopping, why do you why do you not have to pay taxes over there? Because you don't have a contract with that country to pay taxes. You only have a contract in your own so-called fiction, non-geographical territory. India is a title, and the border is non-geographical. It's just in your mind. It's been drawn by someone. That's it. It's fiction. The whole thing is fiction, and that is why Memoven does not recognize it. The passport is made upon your birth certificate. You are rendered a citizen with that, a citizen of a fiction territory, a fiction citizen, a legal fiction of a fiction territory. You don't exist at that point because you have identified yourself as a non-living entity. So you have, with your MON ID, you have all your rights reserved on that. Your right to travel freely, your right to have shelter, your right to have food, your right to breathe fresh air, your right to have good, healthy water, your right to overall health, your right to just basically existence. All the rights that you know and you don't know, all of them are on that ID. Why? Because you assigned your consent away from incriminating yourself and stopping that by saying, okay, now I'm going to uphold the law. That's it. That's all you need to do. You use that legal fiction. When I'm done with all this, all my other PAN cards and everything stands cancelled automatically, or do I need to go and do it with every entity? Send it back to them. You have to send the assignment of consent to all of these agencies. All of the agencies, all of them. Send it back. Just throw. Okay, just keep your passport for right now. You can cancel it out. I've done that. Well, mine though expired only, but and I couldn't quite frankly give a shit. But your but we can still travel outside. You have, okay, who made the aircraft? No, I understand. No, I'm just trying to put it in context for you. Aircraft किसने बनाया? Boeing Airbus. और Boeing को material कहाँ से मिला? Earth से मिला, समझे? Exactly. वो आप ही का तो शेयर से बना हुआ है. और तो ये हर बार मैं लड़ाई करूंगा कि वो लोग समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? लड़ाई तो वो करेंगे ना. लड़ाई so तो I need वो to करेंगे. reach 5 hours before. You just get onto any flight then, right? And there's documents that are going to be in place for you to exemplify all of this. But let's just go step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. And as you go step by step, you will learn more and more about the process. But without exemplifying, this is then all theory. ये जो भी हम बात कर रहे हैं अभी सारी थ्योरी है. वो जो YouTube के चैनल पे वो तो the videos don't make any sense. वो तो they are talking something else only. मतलब? I don't know if I'm at the right channel or not. वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं. 4-5 videos हैं. They are all blanks. As in कौन से चैनल पे जा रहे हो? That community trust. Universal Law Community Trust and MON. And MON? नहीं ये नहीं है. I'm pasting to. Meaning just go on, just if you're on the YouTube or if you're on the Facebook group, just it's all there. I am not. I just applied for it today. अच्छा ठीक है तो अब पता नहीं वो लोग accept करेंगे कि नहीं मेरे को because I have not watched the YouTube. No ठीक है यार मतलब कोई या मार्शल रूल थोड़ी ना हो रहा है बस हमें बस यही है कि I want to know who's interested यार कोई frankly. Oh, I've been interested in since like 3 years. I'd seen that Santosh Bonacci video where he went in, I'll fuck them over, and he did, and he came back having paid nothing. Yeah, but the only thing is we're not fucking anyone over. They're fucking themselves over. Yeah, I would like to do that. You're just standing there. That's what my car is. I changed my number plates and and that was it. Cops came. They're like, oh, this is not showing up in my system. Yes, like yeah, obviously it won't. Because I'm unchargeable. I'm unalienable. Wow. I'm unalienable. And you touch Which that city car. are you in? Which city is this? Doesn't matter. In Delhi.
Okay. So I've been surrounded by 10 cops at one point. Been like, man, are you okay? You So were the same जिसका YouTube आया था, वो जो video आया था? yeah, that was an MON, yes. But क्या sexy था यार वो. but yeah, so 10 cops come around me at one point trying to, you know, charge my car for parking. When they come at 10 o'clock at night and put up a no parking, no sign, or no standing board, और मुझे बोलता है कि मैं चोर हूं कि मैंने अपनी गाड़ी गलत जगह पे पार्क कर रखी है. मैंने बोला तुम लोगों ने बिना किसी के कंसेंट के ये बोर्ड यहाँ पे लगा दिया, मेरे को जरा दिखाना कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ है जहाँ पे सारे के सारे लोगों के सिग्नेचर्स लिए हैं आपने. जिनको आप इनकन्वीनियंस कर रहे हो अभी, आपने कहाँ पे पार्किंग बनाई है लोगों की गाड़ियों के लिए? जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे वो पार्किंग करना अलाउड नहीं, हम आपको चार्ज कर देंगे, भैया वो है कोवर्जन of raping us of our rights to just live, to exist. अरे यार, without my wife just researched, if you're born before 89 you can't get it, the birth certificate. You can go apply for, go call them, give them a call, go on their Them website. who? Sikandrabad? No, just online. Okay. Online, just Yeah, go if to you the are- watch Ashit, आप watch एस YouTube एसडीएम videos related to this. एसडीएम और कलेक्टर ऑफिस में आप कांटेक्ट one करिए. at a time. हेलो. जी, Yeah, SDM just of go to Sikandrabad. एसडीएम सिकंदराबाद ऑफिस में आप वो एक बार वेबसाइट पे जाइए, उसमें ऑप्शन होगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू रिट्रीव इट, डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट. ठीक है. Okay. तो उधर पे आपको तो पूरी जानकारी मिल जाएगी. ठीक है. तो लोकल एरिया में ही जो एसडीएम या कलेक्टर की जो वेबसाइट है, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. Yeah, I'm sure क्योंकि ये लोकल लेवल पे है. I'm sure it must be centralized somewhere also, no? Watch YouTube videos related to this and find Twitter account of your SDM or whatever. Just tag them and send a tweet and they'll help. ठीक है. सही. I would like to. Hello. हाँ जी, sorry, हाँ आपका question था. Yeah. मेरा सवाल ये है, सबसे पहला All सवाल. municipal corporations and corporations, they have a department for Sorry, I'm getting so much birth feedback. and death certificate. Oh, sorry, did I mute you only? Wait. Sorry, can you? There's so much feedback coming from your side. Yeah. All corporations, even Gram Panchayat, they have a section which maintains this birth and death certificates of all. So where you were born, at that place you can get it. हाँ, but I'm sure कि कि online पे भी तो मिल जाता होगा ना? Centralized मतलब NDMC का जो वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो. वो है आपकी दिल्ली में, ईमेल पे आ जाएगा. दिल्ली में फैसिलिटी दी हुई है. That's what I'm saying, that your local place where you were born, from there itself you will get. At that place, whatever government is there, if it is local panchayat or municipal corporation. अभी ई गवर्नेंस मिशन के तहत ना दिल्ली में तो हो गया है कि घर बैठे बैठे आप अपना कोई भी आईडी ऑर्डर कर सकते हैं ना. दिल्ली में तो ये लॉन्च हुआ है. ठीक है. नाउ लेकिन बाहर का क्या सिस्टम है वो आप एक बार लोकल लेवल पे पता करिए. यू विल गेट ऑल दोस इंफॉर्मेशन. Yeah. Because if the digitization has been done, then only you will get. Yeah. If your document is not digitized, you won't get. Yeah, correct. See, best ये है कि most of the people used yeah. Hello. Okay. There's too much feedback coming on someone's mic. Hello. कमल जी. हाँ जी, मैं अशोक. हाँ जी, आप ही के I think. हाँ. Oh my God. If you can just reconnect your mic or something like that, because बहुत ज़्यादा feedback आ रहा है. In the meantime, can I ask my questions? Yeah, go for it. So I have a few questions. I'll go all out at once. Still getting the feedback. Okay, so I'm still young and I don't have any liability. I'm living with my family. So what do I fill in the kindness letter? सर अशोक मंगल जी को अनम्यूट करो.
मतलब म्यूट करो इनको, सॉरी। हाँ हाँ Shall I repeat? Yeah, please. So I'm living in with my family and I don't have any personal liabilities. So जो kindness credits का form है, should I fill it empty? Like No, the you can credits you can conversion. you can do it for your parents as well, but you'll No, have they are to. like first you become the minister, understand the entire process, and then we'll proceed. Okay, sure. Then you get, because the only thing is, if the liabilities are not in your name, then you sign. Yeah. Then either you sign a contract with them, with your own parents. See, we will have to figure another way out for you to do that, to shift the bill into your name, into Minister If I Emoven's name. don't shift it So as my soon name, then it's still because so then they'll keep paying for it. No? Then they'll keep paying for their they share are of okay with electricity. paying at first, and like abhi to they're okay with paying. Later on, they will change on. I'm saying there is no, So abhi the only reason this system is carrying on is because of people like that who are okay with paying for things when it is already prepaid. That is your share. You don't need to pay for it. It's just because of the fear that the electricity will get cut or something else will happen. That's the only thing holding anyone back. Otherwise, people would have already done this many years ago. But this is such a hidden process. Now, it's not even a joke. It's a trust. You have 10 quadrillion, okay? As soon as the bill is shifted into Minister Emoven's title in the legal fiction, as the liability holder of that property or for the electricity charges, then they are automatically discharged because you're secured party creditor. According to the law, debtors cannot make a claim against the secured party creditors. It's like you can't make a claim against your bank. So they cannot make a claim against you because you're the secured party creditor. If they want to take you to court and everything, more than happy, Minister Emoven's right there. Come. Please, okay. You enter court and you're like, hi, can I please know whether I have the right of use of that which you're coercing me into identifying myself as? Judge won't even understand what the hell you just said. And then we have a jury on this side. We have enough Emovens to create a full jury under Ministry of Remedy hearings. In any case, so that is a process that we get to later. But like in the sense, at least start off with, we have to, meaning it's up to you. If you don't have the liability to shift, then you're free already, right? I'm free already. So if me and my father, both of us fill up the kindness credit form. So all the liabilities in his form will be mentioned, but I have no personal liabilities. It doesn't So how matter. should I proceed? It doesn't matter. Then you don't have those debts and liabilities, whatever credit charges and stuff that you have, but then you don't use the credit card after that because. So I don't need to convert. So I don't need to, for the time being, get the. Yeah. I'm asking. So if I can become the minister of MON without getting the kindness credits form filled, वो बाद में कर लेंगे. But I can become the No, MON first. you fill in. Even if you don't have, at least you fill in what you need. Na? You need vegetables. You need food. You need. If you need an e-book, if you need a Minister Emoven robes. So just a lump sum cost would be fair enough. Whatever, man. Fill it. See, this is what I'm saying. This is the self-determination. You determine for yourself what you need to put onto that form, and we'll know which level you're at. Okay. But utna hi hai. And baki, we work everything according to, because what do you want to do? You want to become People's Protection Patrol? Come, let's train you to become People's Protection Patrol then. Let's have you spread this to your other friends who are there, who are keen to get onto this, keen to be lawful, keen to be trained in the law. And literally all you need is that one video of Emoven speaking to the police officer. Just verbatim, just spout that out every single time to every policy enforcer and go and arrest them. Get your handcuffs, get your t-shirts ready for People's Protection Patrol. And that's it. If you don't have debt to pay, then you can, with all of what you're saving, or if your dad does it, then all of what your dad saves in paying for the electricity discharge, when we discharge all of that, then whatever that you save, out of that 100% that you save from discharging the utilities and credit charges, okay, that's all. That's your 100% of savings that you were giving to the system and letting your equity be laundered by them.
So because it's your share, you have reserved your rights, and you know that that came from your share in the first place. Okay, so after discharging my liabilities, like how will? one second. I'm just explaining. One second. Let me just. So I have a as few more questions. when you do that, then from what he discharges of the debts that he is paying in terms of his utilities and his Taxes and all. credit, Like, taxes, credit, but taxes is like a yearly thing and blah blah blah. I'm going to only talk about monthly charges. This is like your utilities are monthly, your credit charges are monthly. So whatever you save from that, that is the 100%. Out of that, 10% goes into your account in kindness credits. We're not taking any money from anybody. It's just it goes and gets parked in another currencies. Like you go to a Marks and Spencers. Marks and Spencers has their own loyalty program, right? Which is tax-free currency. And so therefore, 10% which we save, can I just clarify it? So the 10% which we are filling as a kindness credits from that gets back into the account of the MON. exactly, in your account under your account number, which you will be given. You will be assigned an account number and an exemplification number. You'll be given your welcome kit and everything, so that you can exemplify yourself as Minister MON. In real life, exemplify it. The only thing is, I have this claim from ready. I mean, in front of me. So, what is this conversion? What units do we use to write? it's just converting your energy. How much of your bank balance do you want to go and put into kindness credits? How much do you want to transfer into the IBAN which is given in this on the second page? Rupees, right? We are thinking in terms of rupees yet, correct? Yeah. Well, obviously, that's your locally accepted tender, right? Your locally accepted tender is rupees, it's not pounds. This is monthly, right? Yeah, but with the conversion is to how much you want to convert into kindness credits. So let's say you have savings of whatever your income savings of 20,000, 30,000, 40,000. That's 400 pounds basically converted into slave tokens into the Lloyd's bank account that for which the IBAN is given there. So you then from your account you transfer that into the Lloyd's bank account that's given there as just to keep in your account, and you give your KC account number as reference so that that amount is then put into your KC account non-taxable as safe. So if you want to go do through this in Hindi as well once after this. अगर आपको वो अमाउंट जैसे आपने 40,000 रुपए आपका बचा हुआ है और आपको टैक्स नहीं करवाना है उसको या जो भी है आपके अकाउंट में रहेगा तब भी टैक्स नहीं होगा, पर आपको करेंसी कन्वर्ट कर देंगे काइंडनेस क्रेडिट्स में, तो वो वैसे तो ये सिस्टम छू नहीं पाएगा उसको। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी में नहीं है, वो लेजर में लिखा जाएगा और वो फिएट करेंसी में कोई भी करेंसी वर्ल्ड वाइड में कन्वर्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो लॉयड्स बैंक अकाउंट है और हमने ये पूरा प्रोसीजर बना के रखा हुआ है। आपको टेस्ट करना चाहते हैं जाके काइंडनेस क्रेडिट्स का जो प्रॉमिसरी नोट है फिल करके बैंक ले जाइए, देख लीजिए काम करता है कि नहीं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया बिकॉज मेरे को चांस नहीं मिला, वो भी करना है मुझे। बट इट जो आपका आप जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो भी आपका, जैसे ये 10% जो है वो तो आपके जो डिस्चार्ज करने से जो सेविंग्स है उसका 10% आप डिपॉजिट करेंगे। 90% ओवर एंड अबव योर अर्निंग्स 90% और आपके पास ही रहेगा। वो 10% जो डिस्चार्ज कर रहे थे, जो सिस्टम को वापस डाल रहे थे अपनी यूटिलिटीज के लिए और टैक्सेस के लिए, वो सेविंग्स में से 10% आप इसमें डालेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, जो कि लोग एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। जैसे लोगों को खाना चाहिए, लोगों को टी शर्ट्स बनवानी है पीपीपी के लिए, लोगों को फ्यूल भरवाना है अपनी गाड़ी में यहाँ वहां जाने के लिए, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट के लिए जो वो एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, उनके लिए जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। जब बाकी सब जैसे मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, मैं बॉर्डर्स क्रॉस कर लिए अपनी गाड़ी में ना, वो किसी ने नहीं रोका। क्यों रोकेगा? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो मतलब जो लोग एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं उनके लिए है, या आपकी कम्युनिटी के लिए जिनको जरूरत है इस सब की, एंड दैट इज योर कम्युनिटी पॉट।
ये कम्युनिटी पॉट जो है वो हम ये, क्योंकि हमारे पास और तो कोई कम्युनिटी पॉट है नहीं ना, ठीक है, हम डायरेक्टली इफ यू सो ये समझ में आ गया कि कैसे करेंगे। उसके ऊपर से आपकी और भी कोई सेविंग्स है और अगर आप उसको टैक्स फ्री करेंसी में सेव करना चाहते हैं वो भी डाल दीजिए अपने केसी अकाउंट में। अपना जो आप इंटरनेशनल ट्रांसफर करेंगे उस आईबैन में, और जब और लोग यहाँ पे भी हो जाएंगे, जैसे 100 से अधिक लोग यहाँ पे भी हो जाएंगे, तो हम अपना इंडियन अकाउंट बना लेंगे जो केसी होल्डिंग अकाउंट बन जाएगा। और फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर नहीं करना होगा, फिर आपको यहीं का करना होगा, ताकि फिर वो एक हमारा एनर्जी पॉट बन जाएगा जिसमें से हमने वो सब सेविंग करके अपनी कम्युनिटी के लिए एक पॉट रेडी रख रखा है कि जो जिसको भी जो भी जरूरत होगी एग्जाम्पलीफाई करने के लिए। जैसे हमने पुलिस की गाड़ियों को व्हील क्लैंप लगाने हैं क्योंकि वो हमारा कोलैटरल है। हमने जाके जो हमारी बिल्डिंग्स में बैठे हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं अभी, उनको एविक्ट करना है वहां से, वो एग्जाम्पलीफिकेशन है। हमने फाइजर की बिल्डिंग में जाके उनको एविक्ट करना है क्योंकि वो हमारा कोलैटरल है। 10 क्वाड्रिलियन का वो हमारा कोलैटरल है, अनपेड। फिजिकल एसेट ही तो लेंगे ना, कोलैटरल ही तो लेंगे ना हम, क्योंकि वो हमारी करेंसी में तो हमें दे नहीं सकते। तो जो लोग ये करेंगे उनके लिए है, उनके सपोर्ट के लिए, जैसे उनको हैंडकफ्स चाहिए होंगे, उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होगा, कैमरास चाहिए होंगे मे बी, यू नो। सो ये सब अपने कम्युनिकेशंस के लिए कि कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे ये सब। पर हमें कम्युनिटी तो पहले चाहिए ना, और उसके लिए एक पॉट भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी सपोर्ट नहीं करने वाला है। और हम जितना कैश में कर पाए उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑनलाइन तो सब कन्वर्ट होने वाला है अभी। ऑनलाइन सब शट डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में, आप देख लेना। ये जो बायो हैक्स और गोल्ड टाइम जो आने वाला है, जो निसारा जसारा सब बुलशिट चल रही है, ये सब इस वैक्सीन की तो देन है। सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी अब लीगल टेंडर बन जाएगा और उसके बाद देख लेना सब शट डाउन हो जाएगा। और जब आप वो ही करोगे जो वो आपको बोलेंगे तभी आपकी क्रेडिट आ पाएगी, नहीं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, शट डाउन कर देंगे आपको। फिर क्या करोगे? फिर तो काइंडनेस क्रेडिट्स पे तो आना ही पड़ेगा ना सबको। और हमारे पास ऑलरेडी कम्युनिटी रेडी होगी उस टाइम पे और लोगों को आने के लिए, फिर देखना। तो इस हिसाब से मतलब जब 100 लोग यहाँ पे हो जाते हैं तो उनकी जो लेजर है वो हार्ड कॉपी में भी बनानी पड़ेगी ऑफलाइन, इज इट लाइक दैट? नो, सी द लेजर, आप जो लेजर बनाते हो ना वो आपका अपना फैमिली लेजर होता है, आपका प्राइवेट लेजर है वो। तो आपकी प्रॉपर्टी, ये वो जो भी आपके प्राइवेट में, तो लाइन 1 कॉलम 1 सीरियल नंबर 1 यू राइट असाइनमेंट ऑफ कंसेंट डन ऑन सो एंड सो डेट, अकाउंट नंबर सो एंड सो, एग्जाम्प्लिफिकेशन नंबर सो एंड सो, इन रेड पेन, नेम। आप जो भी आपने फैमिली ट्रस्ट को नेम देना है आप नेम दे दीजिए। जैसे यूजुअली अपने फैमिली ट्रस्ट का नाम लोग अपने लेजर में देते हैं, अपना लास्ट नेम लिख के और फैमिली ट्रस्ट लिख देते हैं उसके बाद। इट्स दैट सिंपल। ये जो सिस्टम है उसने ऐसा किया है बस बैकग्राउंड में, बस लेजर एंट्रीज ही लेजर एंट्रीज हैं बस, कोई असली कोई कुछ नहीं है। उनके लिखने से, उनके स्पेलिंग डालने से उन्होंने क्रिएट कर दिया है ये, और हम उसको बस अपने तरीके से अब अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं अपने लेजर्स में। अपनी मेहनत से हमने जो घर खरीदा था लेट्स से, और खरीदा कैसे, वो तो राइट ऑफ यूज चाहिए था हमें, और बैंक ने वो जो पैसे हमने बनाए हैं वो उस बंदे को देना था जिसने घर बनाया, उसको दे दिया, तो हम बैंक को वापस पैसे काय को दे रहे हैं? क्योंकि वो जो है उन्होंने हमारा सिक्योरिटी खरीद लिया और हमारा पैसा उनके पास पड़ा हुआ था उसके पास, और उन्होंने वो दे दिया बिल्डर को, खत्म, फिनिश्ड। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना था। ये जो बैंक आपकी एनर्जी, आपके राइट्स आपसे रेप कर रहा है वो क्योंकि आपने उस लीगल फिक्शन को सारा क्रेडिट दे दिया, उनकी कॉपीराइटेड लीगल फिक्शन को क्रेडिट दे दिया और घर उसको दे दिया। आप अपनी प्रॉपर्टी पेपर्स पे देख लीजिए, यू आर द टेनेंट इन लॉ ऑन योर ओन प्रॉपर्टी व्हिच यू थिंक यू ओन बट you can't own. So Minister MON is the quiet title. It quietens the presumption that you can be assumed to be in commerce by the system, because they just assume that you're in commerce all the time. Okay, hang on. Do I look like a corporation to you? मैं आपको मुर्दा चीज लगता हूँ क्या? मैं आपसे बात कैसे कर रहा होता? नहीं तो ये सारा का सारा मिला हुआ है उसमें, और ये स्ट्रक्चर समझने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा। और जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो स्टेप 15 है।
तो ये सब समझने के लिए पहले अपना प्राइवेट लेजर बनाइए। तो लेजर बुक लीजिए, रेड पेन लीजिए, स्टैंप बनवाइए मिनिस्टर एमओ1 का इन रेड इंक पैड, ये सब तैयार रखिए अपने लिए। बिकॉज जब आपके पास असाइनमेंट जो ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट है, उसके लिए आपको स्टैंप चाहिए होगा तो टू विटनेस, या तो और भी कोई आपके लिए विटनेस कर सकता है, पर आप मिनिस्टर एमओ1 हैं, आप ट्रस्टी हैं, ट्रस्टोर हैं, ग्रांटर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, सब कुछ हैं आप एज मिनिस्टर एमओवन। और आपके साथ 22 मिलियन और भी हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट ऑफ कंसेंट कर रखा है, और वो सब उनमें से कोई भी एग्जाम्पलीफाई नहीं कर रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, और इसलिए इतना टाइम लग गया है, बिकॉज लोगों की इतनी फटी हुई थी। पर अब नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने दिखा दिया ना कि वो क्या कर सकता है, कि वो लोगों को मारने में तुला हुआ है। तो ऑब्वियसली हम मरनेंगे थोड़े ना, हम तो अपने लिए खड़े होंगे। और एक ही ज्यूरिसडिक्शन है जो लिविंग की ज्यूरिसडिक्शन है, वो यूनिवर्सल लॉ है। अगर उसमें रहेंगे, अपने अनएलिनेबल स्टेट में रहेंगे, तो ये जो क्रिमिनल सिस्टम है वो तो अपना प्रोसीजर तो करेगा ही करेगा। तो मे बी एक 3 से 28 रात जेल में बितानी पड़े, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पलिफिकेशन। पर उसके लिए तो तैयार होना चाहिए ना हम लोगों को। पर बस हम अपने अनएलिनेबल स्टेट में रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी एग्जाम्पलीफाई हो चुका है वो विल्सन पार्क में, इंग्लैंड में ऑलरेडी एक एग्जाम्पलिफिकेशन हो गया है, जहां से हमें क्वींस बेंच डिवीजन से ऑर्डर मिल गया है फ्रॉम हर लेडीशिप जस्टिस टाइम। जस्टिस मतलब दे आर ऑल एक्टिंग, मतलब गाउन पहन के कोई लॉ बन गया, वाह, मतलब इतना आसान होता तो हम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते अभी। पर सब फ्रॉड है। उसने क्या बोला, डिटेंशन यूजिंग कोविड एज कॉज ऑफ ग्राउंड्स is wholly misconceived. Is wholly misconceived. You're not detained anymore. वो ऑर्डर लेके हम बॉर्डर्स पे पहुंच जाए, बस खत्म, ये सिस्टम ही खत्म है। कितने लोगों को संभालेगा, कितने एमओवेन को संभालेगा? तू कौन है एमओवेन, तू कौन है एमओवेन, तू कौन है एमओवेन, तू कौन है एमओ। इफ एवरीवन's minister एमओवेन, nobody is using the freaking stupid legal fiction anymore, क्या करेंगे? Everyone is unalienable. Everyone is legally mature, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या फ्रॉड रोकना था, और वो फ्रॉड रोक दिया। बस पहले ये कर ले, बस सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी ये करेगा उसको आपको सब दिख जाएगा, सब बिलीव हो जाएगा कि ये सिस्टम कैसा है। पर and I know कि everyone wants to be prepared for certain things before they happen, but that is what the system did to you. You are prepared. Look at you, look at yourself in the mirror. You were born prepared because you are universal law. Nobody has to tell you that. It just exemplify it, and it doesn't matter after that. And that's what I'm saying, create your community. Because if you want to use only kindness credits for everything, and you don't want to use slave tokens at all, then you have to get to the source of everything. हमने जाके farmers से बात करनी है, अपना food supply secure करना है। पहले तो उससे डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट मतलब वो अपना डिस्काउंट Yes, करेगा। yes. क्यों क्यों डिस्काउंट करेगा? क्योंकि हम उनको 100 लोग लाएंगे, बोलेंगे कि ये लो, इनको सबको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, आपका जीएमओ बकवास नहीं चाहिए, आप ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे हमारे लिए, हम आपको हेल्प करेंगे आपका यूटिलिटीज डिस्चार्ज करने के लिए, आपको आपका लैंड, आपके राइट ऑफ यूज दिलवाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस ना ले या कुछ ना करे, अब एक एग्जेम्पशन, ये चीज वो और ब्ला ब्ला है ब्ला। कि जो किसान है, we thought about it a lot, and the biggest problem as a awareness program or a group we were facing was कि पैसा ले रहे हैं, इट्स अ फ्रॉड, पैसा ले रहे हैं, इट्स अ फ्रॉड। बट जो बात है केसी वाली, कि केसी में जाएगा एंड केसी में जाके वो आपका ही रहेगा। तो अगर हम इसको इस और वो जो तरह 10%, देखें नहीं नहीं, पर वो कि जो ये आपका 10% है, वो जैसे जो वन सेकंड, पर वो जो 10% है वो आपके डेट्स एंड लायबिलिटी डिस्चार्ज है, उसका 10% है, आपकी इनकम का राइट 10% नहीं है। राइट। तो अब वो जो अमाउंट है वो केसी में फॉर एग्जांपल वो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मंथ का 3000 जाता है किसी किसान का। तो अगर हम उसको लेमन लैंग्वेज में ये बोलें कि इट्स लाइक अकाउंट विद अ मिनिमम बैलेंस, क्या ये बोलना सही नो नो रहेगा नो या ये नो 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 गलत नो, है? नहीं कुछ नहीं। अगर किसान के पास नहीं है देने के लिए, वो तो आप खाना पका के दे, वो तो खाना उगा रहा है ना आपके लिए, वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट दे ही रहा है ना वहां पे, वो अपने 5 घंटे दे रहा है ना आपको, तो हम जब उसको उनका वहां बेचने की फर्स्ट जरूरत ही टाइम नहीं है।
उसको बोलो First कि time, भैया हम आपके लिए ये कर लेंगे, आप हमारा खाना सिक्योर कीजिए। तो फर्स्ट टाइम जब हम उनको एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे जो भी आई बैन वाली जो थिंग है, आप क्या करिए, जो भी है उसको उनको मेरे से फोन पे बात करा दीजिए। करेक्ट करेक्ट, आप क्यों, अब जब आपको उतनी समझ नहीं है इसके बारे में, तो आप क्यों पढ़ रहे हो उसमें? और वी कैन गो एंड मीट देम आई एम अलोन। मोर देन हैप्पी यार, आप पंजाब आ जाइए, हरियाणा आ जाइए, कहीं भी आज मैं तो चलने, मैं तो कब से पूछ ही रहा हूँ ना लोगों से कि चलो 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 चलो, कोई तैयार तो है। मैं तो बात कर गया अपने हरियाणा के फार्मर्स से, मैंने तो उनको बता रेमेडी भी दे दी है। पूछ लीजिए मिनिस्टर एमओएन से, पूछ लीजिए 1533 से, हम गए थे। एंड व्हाट इफ आई जी वो से के वीडियो मैंने अपलोड की थी एआईएम के लीगल ग्रुप में। मैंने लेकिन पर हाँ हाँ एआईएम मैंने तो अपने यहाँ आप को तोप समझते हैं ना, तो हाँ उन्होंने हाँ हाँ ये अनसुनी कर दिए। मैंने 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 यहाँ पे शेयर नहीं किया, मैं टेलीग्राम के उसमें शेयर करता हूँ, वो वाली वीडियो में शेयर करता हूँ टेलीग्राम को। हिंदी में आपने बात की है, वो इजीली सबको समझ में बट इट्स बेसिकली ऑल अबाउट, किसी के पास 26 एकड़ है, किसी के पास 20 एकड़ है, पर दिया किसने है? वो सब हमारा ही तो शेयर है, और वो उसके ऊपर खाना उगाएंगे, ऑर्गेनिक खाना बनाएंगे। दैट इज सोर्स, that is source. We need to get to that. We need to secure our food supply first, because Bill Gates' indemnity of COVID and all of this gold time and all of this bullshit that's happening is going to attack our food supply first. आपको क्या लगता है ये farmers protest जो हो रहे हैं, ये planned नहीं है? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि ये प्लान्ड है, और जो उनको गाइड कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको मालूम है कि प्लान्ड है। ये फार्मर्स लॉ जो उन्होंने इम्पोज करने की सोची थी, ये अपने टाइम से सोचा है, जहां बिल गेट्स 80% एग्रीकल्चरल लैंड ओन करता है इस सिस्टम के लिए। he is the best doctor in the world, and he owns the most agricultural land in the world. And who is he funding? Monsanto. Wow, amazing. Who's he funding? Moderna. Amazing. Who's he funding? CDC, WHO. He's funding all of it, man. That's his indemnity. That is why every death certificate is COVID, because you're all coronavirus. We secured the system with the UCC1 on the 24th of February of 2020. 3 weeks later, you had coronavirus because we shut down the system. Stock markets 26th को गिरे और एक हफ्ते तक गिरते गए, क्योंकि हमने सिक्योर किया था इस सिस्टम को। उनको कोई राइट ऑफ यूज नहीं है अपने ही लोगों का, अपने ही नामों का, किसी भी चीज का उनको राइट ऑफ यूज खुद नहीं है। वो खुद फ्रॉड में चल रहे हैं अभी इस्तेमाल करके सब, क्योंकि हमने सिक्योर कर लिया है, वो हमारे हैं सारे के सारे, उनको हक नहीं है। और ये जो एग्जाम्पलिफिकेशन जो इंग्लैंड में हुआ अभी मोहम्मद शाह में, उसमें एग्जाम्पलीफाई हो गया था सारा, और क्वींस बेंच डिवीजन तक लेके गए थे एडमिन सिस्टम में। वो असली क्वींस बेंच डिवीजन नहीं था, असली क्वींस बेंच नहीं है वो, बिकॉज क्वींस बेंच है ही नहीं, बिकॉज सॉवरेन है ही नहीं, बिकॉज कॉमन लॉ नहीं है, बिकॉज कोई खड़ा ही नहीं हुआ करने के लिए। सो सीधा यूनिवर्सल लॉ है और एडमिन सिस्टम्स हैं बस। इट्स ईदर अ कमर्शियल सिस्टम और यू आउट ऑफ कॉमर्स। तो हमने फार्मर्स के पास जाना है, हमने बस मैं चल लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमने वो सिक्योर करना है पहले। हम इस लेवल तक आ जाए अंडरस्टैंडिंग का कि हमने कैसे करना है, और एटलीस्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जितनी जल्दी हम ये सब कर लें उतनी जल्दी हम तैयार हो जाएंगे बाकी सब आई चीजें करने थिंक के लिए। फार्मर्स के पास जाने के लिए वी नीड टू बी एटलीस्ट 25 इन नंबर्स, एंड देन वी कैन वाई गो देयर। वाई एटलीस्ट 5 से 7 लोग होने चाहिए। एंड क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों? थॉट प्रोसेस अलग है ना यहाँ पे। हम उस दिन थॉट प्रोसेस हर जगह ही अलग है भाई, हर जगह अलग है। आप दुनिया में कहीं भी जाओगे सेम है। मैं बस आपसे डिफरेंट लैंग्वेज में बात करता हूँ। आप क्या सोचते हो जो इंग्लैंड में बैठे हो उसको आपकी थॉट उसके दिमाग में नहीं चल रही है? ये सब सिस्टम का बनाया गया थॉट है और कुछ नहीं है, कि बस जो उन्होंने बोला है उसके पीछे पीछे बस चलते जाओ। हम वहां जाएंगे, ठीक है, 5 जाएं 10 जाएं, जो जितने भी हो जाएं, पर जितनी जल्दी हो सके। जैसे जिनके पास डेट्स नहीं है वो अगर ये सिस्टम समझ जाएं
और हमारे साथ चल रहे एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, हम सब साथ चलेंगे, कोई अलग अलग, किसी को अकेला थोड़ा ना छोड़ने वाला है कोई। और अगर जेल में डाल देंगे, हम सभी को डालेंगे, एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हम उन इम्पर्सनेटर्स ऑफ पुलिस को अरेस्ट करेंगे जाके, जो कि इन लोगों को कोर्स कर रहे हैं, जो उनके राइट्स को रेप कर रहे हैं। दैट इज व्हाट यूनिवर्सल लॉ मिनिस्टर्स आर। फर्स्ट ऑफ all of us are PPP, all of us are People's Protection Patrol. That is what you are. You're upholding the law, right? So if you see someone breaking the law, isn't it your obligation to uphold the law? Isn't it your obligation to arrest someone who you see is breaking the law? मैं तो गया, तो मतलब वो एमओवन तो गया था उसको अरेस्ट करने के लिए, वो बंदा हाथ जोड़ के भाग गया। अगली बार उसको अरेस्ट को उसका पूरा आर्म पकड़ लिया और अरेस्ट कर दिया उसको, सॉरी 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 सॉरी। अरे पर इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जब हम 5 से 10 लोग हो जाएंगे तो अपने राइट्स रिस्टोर करेंगे, उनको उन्हीं के जेल लेके जाएंगे और प्रोसेस शुरू करेंगे उनके ऊपर। पर हम वहां तक आ तो जाएं, क्योंकि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, कम्युनिटी चाहिए उसके लिए। I think we should take questions from the people. Yeah, there was sorry. I have a request. Can you point out all the steps in the Facebook page that will be convenient for all? Well, dude, this is self-determination, man. I'm not going to find. I've already found out everything and put it on there. Just go through it. There's the steps. There's the. It's all available on the website. It's on the website. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. It's all there. Steps to self-determination. Go on to the more tab. If you have your phone open right now separately. Yeah, I've opened that PPT. Okay, so open. Go to the more tab. Go to undocumented, and 16 files are there. Read all the 16 files. I've downloaded them all. So read them. Sorry, where? Undocumented in the more tab. If you're on your phone, then there'll be 3 lines on the top right side. Click them. Drop down menu. Which platform are we talking about? UniversalLawCommunityTrust.com, the website. Hello. One second, bro. Okay, I'm just gonna throw it open to someone else as well, because we have some hands raised. So Mr. Kapoor, was it who's Ashok was also there wanting to ask some questions. Ashok, would you like to ask your question? जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो काइंडनेस क्लेम का फॉर्म, जो क्लेम फॉर्म, हाँ जी, नंबर पेज पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी, आरजी स्वाइन कर को नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, वो मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा। जिन लोगों को डिटेल्स चाहिए होंगी उसकी, वो 10% डिपॉजिट करने के लिए, जो कि आपके डेट्स और लायबिलिटीज डिस्चार्ज करने के 100% का जो 10% है वो डिपॉजिट करना है वहां पे, और आप ही के अकाउंट में पार्क होंगे वो काइंडनेस क्रेडिट्स में। तो वो जो आरजे स्वेन का अकाउंट है वो इंटरनेशनल आईबैन नंबर है, तो उसका जो एड्रेस है वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो पर पहले काइंडनेस क्रेडिट फॉर्म भेज दीजिए और उसके बाद वो प्रोसेस करेंगे। तो मैंने भेज दिया मेरा, ठीक है। ज्वाइनिंग में कुछ पैसा भरना नहीं, वो जब ठीक है, तो आपने उसमें से आपने डिटरमिन कर लिया ना कि आपकी बिजली ये वो कितना लगता है। हाँ जी। तो उसका जो 10% है वो लेके उस आईबैन में आप डिपॉजिट कर दीजिए। पर नहीं, मेरे को आपको पहले अकाउंट नंबर देना होगा। मैं आपको आपका अकाउंट केसी अकाउंट नंबर और एग्जाम्प्लिफिकेशन नंबर दूंगा, क्योंकि रेफरेंस जो उस डिपॉजिट का रेफरेंस होगा ना, रिमार्क्स होते हैं, उसमें आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, केसी अकाउंट नंबर लिखना है, ताकि वो जो जब ग्रैंड लेजर में जाएगा तो आपके अकाउंट नंबर के अगेंस्ट वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा आप ही के लिए। तो मेरे को थोड़ा ये सब, बिकॉज मैं एक ही हूँ यहाँ पे जो कर रहा हूँ, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है करने के लिए जो कि कर पाए ये सब एडमिन वर्क मेरे साथ।
तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि जितनी जल्दी लोग समझ पाए ना और जितनी जल्दी मैं दूसरे लोगों यहाँ को पे मिस्टर हैरी हैं जो हम लोग पूरा ग्रुप के एडमिन हैं, ठीक है, यहाँ पे संभाल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी यही सब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद अस डायरेक्टली। I can't trust this right now because you've been giving false information, right? So I need someone to trust completely who's aligned with universal law. So you'll have to up your understanding of it or your understanding of it. Trust me, trust me, I will share the burden, but only once I'm sure, na. I can't just go out on a limb. अगर आपने उसमें गलती कर दिया फिर, let's say, because I don't want to be unfair to other people, right? It's just insecurity, that's it. Listen. One second. Just insecurity. What do you mean by saying that? It's simple. We are already doing admin work, and you're not doing. Okay, listen. I'm not going to repeat myself time and time again to the same thing. I have been clarifying for people what you have been telling them. So let's not go there again. I have been. What are you trying to say? You have been asking some kind of admin work and all those stuff. We are just giving you options. That's it. I know you're not giving. The problem is that I can't trust you to do it. So just get your. Then you cannot trust anybody. No, I can. What? You can't trust yourself as Minister MOM, I am saying, okay. How are you saying I'm it not as just Minister saying as a MOM? layman. Yes. How are you saying it as Minister MOM? I have been assigned everything. Okay. What? Okay. Really? And what is your understanding of the process of how the admin will work? Why don't you explain me that? Okay, just tell us. What do you want from us? Just tell you. And this whole process, whatever I've been saying for the last 2.5 hours, has been absolute bullshit. Is it? Has it gone right above your head? It's not. Please. It's okay. Mr. MON, take your time, and that's fine. Meaning, you know how I did it. You know how I am in this amazing position to be able to get people together under this under universal law, in universal law, and how you understood it this well is only because I was there and I made the effort and determined it for myself and aligned with universal law and aligned with the structure. I did not make it up on my own as I went. Okay, I aligned with the exact structure, and that is why I am trusted to do this. Okay, so it's not, I didn't go and tell MON that you are insecure. No, I didn't go and say that. I took responsibility for what I did. Unfortunately, I can't say the same about you because you're just making excuses right now. Oh, we're handling the admin on this side. First of all, there are no excuses from this side, and I have already told you that our group name is Universal Law. Okay, so ULCT, we have removed it. Okay. It is not about the name. You're still guiding people on the structure. Do you not understand that? See, there are some doubts. There are always doubts. Okay, if you say doubt is a problem, then there is an issue. Always your website and your link to admin already shared. Okay. So then stop. So the links were shared genuine. I am not guiding anybody. First of all. Then how? And it's very clear that your links were shared. Your links were shared. One second. Wait. Just clarify it. Wait. Just hold on. I'm reserving my right right now to speak. Hold on. You want an answer? Let me give you an answer. Okay. See. I have wait. Let me give you an answer to what you said first, and then we can carry on. Give your answer. Yeah. Okay. Right? Yeah. You guided people on the structure. Who asked people for 10,000 rupees first? I didn't ask anybody for 10,000. Really? And we didn't have that conversation. And we didn't have that conversation. So that 10,000 was for private purpose. You did not. And why was that? When you were specifically told not to do that. See, and you tell me that I can trust you after that. And then you tell me that is aligning with universal law. That is a problem. That is a problem. No. That is not a problem. That is not a problem. That is your problem, which you need to take responsibility for and sort out. I think you got the, first you got the message. What was the message? Did you get any message? Do you have the complete message? Wait, just from your side. Message? From your side, I'm not. What have I understood of it? See, you tell me, what did you understand? That's the only thing that I'm asking. What did you told me that you were going to charge people 10,000 rupees for what? For doing what? For doing the admin work that you were doing. No. Oh, really? Then what did you say? No. Why don't you It was sustainable development. Wait. It was sustainable development.
Oh, really? And you were going to charge them for Yeah. what? Because Mr. Emowen, the problem is that And you didn't See, think see. that they were going to do it there on was their a own confusion and trust created themselves. See, by the problem is this, that incomplete information is a cause of problem. You And I think you went have the on incomplete. behalf of the trust and told them that you No, I wanted don't 10 behalf. Don't say that. as Minister I can Emowen, send right? you the email. As Minister Emowen, I right? can give you the. no. As, Let me explain, please let me explain. This is what you had told me. Yeah, you did not understand the message because people are already here with message. Okay, great. You Okay, can ask okay. anybody here. Okay, great. There And are then- people, there and are then- group members and who are then- coordinator members. You ask Man, them first. Man, listen. No. Yeah. I don't I'm have not to saying ask just listen anybody to me. else. I don't have to ask anybody Okay, else. then You told it's me incomplete this. information. No, you told Yeah, me I told this. you. Yeah. I It's not told you incomplete if you something. told me. I Okay, told for you sustainable something. development. And what did I tell you at that time? Yeah. Instead of asking, on what basis were you asking people for money, man? I was just asking for membership for sustainable development idea. That's it. And Over and oh out. my God, really? And this had nothing to do with ULCT? No. it was a That's a lie. confusion created by AMT. That's such a lie. There is a problem And you want me here. to trust you, That and is- you're that saying is- that, and you're saying that you're doing Do you have the message? One Do you second, have one the second. message? One Hey, second. No, I easy, have don't your repeat anything. conversation. Don't be a puppet. Don't be a puppet. Tell me one thing. Do you have the message? See, this is why I can't trust you. Yeah, that's the problem. To do anything. Incomplete information. No, you have been chaos. providing wrong information to people. I is am why. not providing. Oh, I am sorry. Okay. I am okay. sorry. I have not then why, provided then any why wrong are people, information. Okay, great. You're not. Then why are people thinking that they have to pay 60 Because pounds? there is an IBAN number. Okay. No, there is an IBAN why do number. people think that they have to pay 60 pounds, which is 6,000 rupees out of their savings? See, for your kind information, when I did the transfer, it already told me that I was trying to transfer 500 rupees. Okay, it's my SBI account. Listen, everyone, this is a public conversation and I'm just sharing my experience with you. Okay, so I was just trying to transfer 500 rupees, correct? So 500 rupees, when I tried to transfer, it showed error. So it told me that minimum of 26 to 30 GBP is allowed. That's a minimum amount that is allowed. Due to the non-disclosure agreement, I cannot say what is the exact amount that I input. Okay, so you can try it by yourself from your side. It's RBI guideline. It's not my self-created guidelines. If you want, on the first place. Where did the 60 GB come from? Where did the amount come from? I have just said approx. Why did you say that? Why did you determine it for anybody else is what I'm asking. Who are you to determine anything for anybody else? First, listen to me. I didn't determine. I just shared my opinion. That's all. You did. That's you determined all. it for somebody else. No. When you told them a figure which comes back to us. Which comes back to us. I just told them what I faced. I just told. Oh my God! This is what I'm saying, you man. need to understand. You are confused about. One second. Let me just reserve my rights to speak, please. Let me reply to him because he thinks he's doing something really good. You confused people. They came back to me, which is exactly what I told you in the first place. That why don't you go through the whole process yourself? Once you have an understanding of it to a certain degree, then we can go ahead. See, buddy, what I have paid, okay, and how I have paid, I have explained. You haven't paid anything, okay, first of all. It has been parked in your account, so you haven't paid anything. Stop telling people that they're paying anything. I am just talking about the transaction, first of all, okay? So then stop calling, then call it what it is. Don't confuse. I am not confusing it, I'm clarifying it. I am very God. straightforward. I am talking about the transaction. Okay, just talk about the transaction. You didn't create it. You don't pay. That's not a point. Here it's all what about are you transaction. saying? Okay, have I done the transaction? Hello. Yes, but you haven't paid anyone because it's in your account in KC. I know. So then why are you saying paid in the first place? There has to be transaction done or not. See, this is what I'm saying, and you think you're doing. You think you are a trusted person or a trusted being in this. Oh, fine. I'm telling you, you're not right now. Okay, fine. Because you're telling experience is not a trusted. Well, no, it is not that. See, this is your perception of what is being said. Okay.
And there is also a tax that was deducted, and I think the tax was 18 to 20%. Man, You can calculate on your own. Why don't you take that up with MON? Because I don't do that part. Okay. Take that up with MON. Why don't you email MON then? I have already emailed MOM. Okay, regarding this, the transaction and all fees, I have already no about the tax. Tax, tax I have paid because this was deducted from my account. Yeah. Okay. Just go and ask. Go and ask. I'm not going to determine that for you. I don't know why. I don't know how. I'm just saying that's what you should have told others instead of saying that they shall have to pay from. I have already told that. I have already told them there is a certain amount of tax that is deducted. That is, I think it's 18 to 20%. You can calculate it online. Via transfer, there are many thousands of apps which can calculate the amount of tax that is going to be deducted and surcharge. You can calculate on your own. Not an issue. I have already explained this in the meeting. But of course, this is an online transaction issue. There is all online and offline. There are both kinds of people here in the group. See, quite frankly, you're at, man, that's what I'm saying. You're at like you haven't even completed all the steps yourself. You're barely on step 4. What admin are you handling when you haven't? That only. See, oh my God. That's the reason I am talking about step 4 only. You don't understand the process, buddy, is what I'm saying. Try and understand the process first. Don't go and sit on a high horse and be like, I'm doing this and I'm doing that. No, it's not about you. I am not. It's not about any of us. To listen to me, okay? I'm not saying that you're forcing anybody to listen to it. Nobody is telling you that you're forcing anybody. Okay, all I'm saying is that everybody. That's it. No, you did not share your experience. You told people what they have to do, and you did not let them determine it for themselves. Is what I'm saying. I have already told them. Please ask this question on Facebook. After having 1.5 months of meetings, you have still going the other way and then having conversations with me. No, you called me. So okay, to clarify. Oh, I have told this to this one, and I have told that to that one. ULC. Yeah, ULC. Mr. Harry, can you tell where this 10,000 matter erupted? I don't need Harry to tell me because you told me. Yeah, I told you this is a matter that is going on and here. I am not here to propagate slave token exchanges because someone thought that he would promote slavery more. That is not MON. Get that crystal clear in your head. And if you can't understand that, then you're not fit for admin, obviously. Which is why my whole trust issue. I'm just doing the. I am just doing the conference. No, I am not an admin. Did you? Okay? Did anyone? Did any admin? Meaning you can determine that for yourself. You can determine that for yourself. Okay, but nobody in ULCT, literally, or any MON, at least have enough respect for the MON that created this structure, for at least her to be able to tell you that, okay, I can trust you enough for this. But no, you had to think that you were some kind of leader and go and do it for yourself, which is exactly what I'm trying to explain to you, and you're not understanding. And because your perception is so clouding everything that I am trying to belittle you, I'm not trying to do any of that, okay? I'm just trying to tell you that the process, the structure works a certain way, and it cannot be deviated from because you put other people at risk. I didn't keep any people. I did not. There is an option of everything. We have shared everything on See, chat. That's what I'm saying. That's what I'm saying. You're behaving like a systems agent who is trying to weasel his way out for no rhyme or reason. I didn't say what you were saying. That's your perception of what I said. I said you put people at risk. I never said you did. I said that you put people at risk because you guide them in a certain way that is not in alignment with the trust. Can I try to explain in some one-liners if I can? If please. First, see, what happened is that we shared the Facebook group, the international Facebook group, from very first meeting. The problem is that we didn't know about the India group link. Once I saw that link, I started shared
that one also. When you came Oh, on you the didn't. Oh, okay, Telegram okay, okay. channel, One second, you one said second. Emma, in the Emma, Telegram. one second, one second. Emma, when did you know about the India link or not? I knew about No, India no, link. I'll Okay, tell there you you from go. the start. Okay. I'll tell Yeah, you yeah, from from the the start. start. Well, Harry, you came in only after Emma went, right? What happened is He that got when you you on came here, on the, right? So, meaning, why wasn't that disclosure given to you then? what happened is when you came on the Telegram channel, you said that why the India group link is not there. Then I tried to find that group, No, and one guy by the name because. Vishal shared the link with me. Sure, sure. Then we started sharing that link also. And after that, we always shared all those 3 to 5 links. Now I have found 5 links. Ministry of Remedy, Facebook group, Facebook page, India group, and Kindness Credits page. So we are sharing all those 5 links as well from the start. And when you told me that we need the Proton IDs for the meeting, when we held the meeting around 20 or 25 days back, we started asking for the Proton IDs as well. And see, what happened is the AIM team created the confusion. The problem is that Oh, Mr. Amavan shared that we 10,000 thing. have a comment though about someone praising AIM for what they do. Yeah, for sure. For No, sure. what happened Absolutely. No, is no, no. I'll We explain have that. someone praising AIM, which will go and have other people commit fraud upon their own souls and continue Let to do that. It's almost like people don't understand what we've been talking about till now. But that's fine. Meaning, do whatever you want. It's self-determination, guys. And I hate to waste my time, quite frankly. I'm not talking about you, Harry. I'm just man, quite frankly, you don't know about organization. And if someone's ready to commit fraud upon their souls to have great organization skills, then great. You know what? Those guys have threatened me through other people. Oh, मैं तो इसको देख लूंगा. Okay, I'd like to see how well they're organized. Zoom user, you don't know how much issues there are in the AIM. Anyhow. You don't know. Sorry to interrupt. Let's talk about simple in layman's term in So Hindi what language. happened What is, we cover up. That's it. so Yeah, what you just happened is explain that from See, again, you're just telling people what to do, man. That's what I'm so what saying. happened? No. The problem is that I will come on to the 10,000 part. What happened is that Mr. Emovan shared this 10,000 on and the letterhead to some lady. I know her. Okay. What happened here? She shared that letterhead and the 10,000 message with some guy by the name. I'll not say the It name. doesn't matter. Should I It doesn't say? matter. No, Yeah. please don't. So that guy shared the information in a group. Then somebody in that group shared the information to Vikas. So Vikas got angry about this. So he went on and shared that letterhead and 10,000 information with everyone in the AIM. So that's where now the problem was. There's another thing. उस टाइम पे मिस्टर एमओएन जो है ना वो यूएलसीटी का कर रहे थे, मतलब यूएलसी का बता रहे थे लोगों को. तो इन दैट केस उसी वक्त वो 10,000 वाली बात हाईलाइट होगी और दोनों चीजों को लोगों ने कनेक्ट करके देख लिया. वही तो होता है एंड ना. जो कोऑर्डिनेटर वाला ग्रुप था वो भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल के लिए था, बट उसको भी लोगों ने उसको यूएलसी से जोड़ दिया एंड पूरा का पूरा क्लाउड बन गया कि ये पेड सिस्टम है एंड ऑल. वो पूरी बात बिगड़ गई. यही तो मैं बोल रहा हूँ. You know what happened yesterday? एक ग्रुप है टेलीग्राम पे. I will not take the name. There are 14,000 people there, and one of the admin or one of the member is there in this chat also. I was very angry at 4 o'clock in the morning, and they were fighting over ULCT being called a cult. मतलब ULCT के अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके कल्ट बोल रहे हैं. नहीं. अरे बड़े सारे लोग हैं जो यूएलसीटी को छोड़ के उसको कल्ट बना के अपना ग्रुप बना दिए. वो भी ग्रुप डिसबैंड हो चुका है क्योंकि उनमें ट्रस्ट ही नहीं है. Yes. वो यूनिवर्सल लॉ को आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो मतलब आपको खुद में ट्रस्ट नहीं है. मैं यूनिवर्सल लॉ को ट्रस्ट करता हूं. मैं ये कह रहा हूं कि बाकी सब अगर यूनिवर्सल लॉ में अलाइन नहीं है देन दे आर एडिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन. Let's not add to the administration, guys. We all need to come up to the same level.
So first of all, we need to understand the structure and the way it is, because it's very specific. Please understand this. I really understand You know, your and and structure part by the way, जो आप बता रहे हो ना, structure वाली बात, it's very much important actually, because ये इतनी बड़ी चीज है कि इसमें अगर structure में एक भी error हुई तो वो एकदम मिस इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। और because the system is built like that ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। How I have maintained doing these meetings and getting people or explaining it in a certain way is because I don't deviate from universal law. I can't deviate from the structure, because then I put myself and others at risk of them then putting their own spin on things. You can't put your own spin on universal law. You can't say, okay, let me have one eye in the front and one eye at the back. No, you can't say that. Okay, you can't do that. So पर I'm just एक saying चीज the है यहाँ पर जो पैसों ecclesiastic वाली बात है ना, यहाँ पर ये फ्यूचर में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बहुत, देखिए होता क्या है कि एमओएन मिनिस्टर बनने से किसी की ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर तामसिक है तो वो एकदम ही सात्विक बन जाएगा, राइट? तो बहुत सारे लोग हैं जो मिनिस्टर बन के या मिनिस्टर बनने से पहले मतलब बिजनेस में जा रहे हैं, अपने कर रहे हैं, तो वो लोग भी कंफ्यूजन्स क्रिएट करेंगे फ्यूचर में भी, अरे नो डाउट। आपको क्या लगता है इतना टाइम क्यों लग गया ये सब करने में? क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते हैं और लोग अपना करना चाहते हैं। लोग अपनी डेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्चार्ज करना चाहते हैं, पर अपनी कम्युनिटी को नहीं देना चाहते हैं कुछ। इसलिए तो इतना टाइम लग गया है एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि लोग साथ नहीं आते हैं ना। मत आओ, मेरे हिसाब से कोई भी साथ मत आओ यार, सीरियसली कोई भी साथ मत आओ, फिर देख लेना ये सिस्टम क्या करता है आपका, देख लेना। अगर स्लेवरी ही कॉम्पाउंड करनी है तो देख लेना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो जिसके कोई डेट्स लायबिलिटीज नहीं है, मैंने अभी क्या बोला था सबको, क्योंकि वो यूएलसीटी का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे किसी को मना करने के लिए थोड़ा ना है कि यार ज्वाइन मत करो, कि अगर आपके पास 10% नहीं है तो आप मत करिए ज्वाइन। नहीं, प्लीज आइए। अगर 10% नहीं देने के लिए आपके जो 5 आवर्स हैं कम्युनिटी को जो देने हैं हफ्ते में, आपके वो डिस्चार्ज करते हैं आपके डेट्स और लायबिलिटीज को। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैंग्वेज इशू। तो लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना पे वाली बात और पार्किंग वाली बात, केसी में लोग इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ना कंफ्यूज कर लेते हैं और जाके इधर उधर लिख देते हैं। यार क्वाइट फ्रैंकली वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं सबको बोल रहा था कि अपना ग्रुप नहीं बना के बस उनको फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, क्योंकि ये सारी मिसकम्युनिकेशंस तभी होती हैं जब मल्टीपल लोग आ जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, पर जिनको मालूम नहीं होता है कि पूरा कैसे एक्सप्लेन करें, तो वो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है कि हम जो इन्फॉर्मेशन अपने में ले रहे हैं वो आगे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। Is it exactly in the same way or is there a deviation? But I would really I'm just saying really that want to say when the group was yeah. created, the invitation was already sent to you. Okay, and I think you have Listen, to share no. I don't have to do anything, boss. You are trying to get me into a group that you didn't ask my consent for. You understand that? Let me intervene. I'm so sorry about that. You can't say I'm universal and I do this and I do that and I ask everyone for their consent and then muscle me into a group and why then did you join it? Then you leave it. I did leave it. Why then? Why joining then? Because there was so much crap on it. Like I told you, there would be. Crap तो आएंगे ही, वो बाद में रिजॉल्व हो गया वो मैटर। मैंने आपको इसलिए, oh my god, you know, the only thing is you're so defensive all the time. See, what did I say in the beginning? It is. See, I really want, because I asked perception you. Is see I asked you very clearly it's very straight that the Facebook India Facebook page was in alignment with ULCT. All you had to do is just call people to that group. They would have gotten all the information because it's already on there in a certain way. That is in alignment with ULCT, is trusted. No, actually that is it. Confusion वहीं से start हुई। जब आपको पूरा प्रोसेस मालूम ही नहीं है कि कैसे होगा, आप खुद ही स्टेप 1 पे हैं, फिर आपने लोगों को स्टेप 1 के बारे में बता दिया। जब आपको फुल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है स्टेप 1 की या 2 की, फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो ना यार बॉस। फिर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आऊं और आपका मेस सॉर्ट आउट करूं। कितने लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, ठीक है? Then that is your perception, boss.
I'm saying Boss, with all the people you that I have can't interacted, na, you with all can't the, expect I'm 100% sorry, accuracy. ठीक I'm है, sorry, हिंदी no, और इंग्लिश में जो आदमी जितना अच्छे से बॉस, बता वो ना सकता है वो ना वो वो ना कोशिश कर आप सकता है, वो ना आप क्या ठीक करो, है। आप आईने में देख लो और अपनी आंखों को बोल दो या अपने बॉडी को बोल दो कि आप 100% एक्यूरेसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप 100% एक्यूरेसी अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता तो फिर कभी कोई बीमारी नहीं होता, पहली बात तो ये। अच्छा, दैट इज योर परसेप्शन ऑफ इट, कि आप इट्स जैसे नॉट अ बने, परसेप्शन, कि जैसे इट्स आप वेरी बने हुए सिंपल, हो, आप बने हुए इट्स हो ना, वेरी सिंपल। आपके हाथ कहाँ Everybody is पे हैं? already governed by universal laws. There is Exactly, conditioning. and they are Okay, there perfect. is conditioning. Universal laws That creates are, problems. oh my god, It's see, this not is what I'm universal saying. law that creates problem. It's the conditioning and the belief system that creates a problem. So that is what I'm saying, that you are not in Now, I am also alignment with saying the same universal thing. law. That I you am also saying created the same no, thing. you're not saying the same thing. You created the group, you went there, you wanted me to be part of your group. When your group, I am not here to create more and more groups. We are here to get everyone onto one inner standing, one platform. There is no ego here. So stop creating one where there is none. It's very, very plain and simple. So shall we delete Facebook and Telegram group? Oh my God, what is wrong with you, man? This is what I'm See, saying. I'm just asking a simple question. If No, everything you're not, is illusion, okay, I have already shared your see, all that's the what I'm details and saying. everything. That's what So I'm just saying. see that is what I'm saying. If nothing was done till now from our side, okay, there was a illusion, there was a stupidity. Okay, fine. Who said stupidity for? Okay, stop putting words in my mouth, man. This is being recorded. You can listen to Yeah, anything no that I have issues, said. no issue. Okay, and I forward Okay. it to you as well. I don't have an issue. I No said from issue. the very beginning to you that if you don't have the understanding and the confidence to do this, please send people onto the Facebook group and we will sort it out. And when you're ready, open up your own groups. I don't mind, man. We want this. We want it to go forward. I never said that. What did I say to you? I said, amazing, man. You got 50 people, 100 people. You're the one who's got them here, but I'm the one who was having to straighten out what you've told them about it. And they don't have trust in the process because they have understood something different from your side. And when I explain it to them, they have a separate, different understanding. And that is the clash that is created. That is what I wanted to do away with, didn't want to start in the first place. And all of this obviously needs to happen for us to be able to come to a understanding that you need to just align with the ULCT structure, nothing else. And if your explanation is not in line with that, sorry, boss, I'm going to be straight with you, man. That is not in alignment. I'm not taking guarantee of everyone that everyone should understand me. So I'm free. See, that's what I'm saying. You do it to just do your own thing. Then do your own thing. Then don't come to me when you get into the world is not perfect later. No, boss, you have asked me, and I am constantly guiding you. But then you take that guidance, you apply it in a certain way, and you tell someone else something else. I have told you very clearly the world is not perfect, and I think it's a single line answer to every whatever happened. It is. The universe is perfect in whatever it does. Universe is perfect. Yes, and therefore you are universal. Okay. You are its law. You are its living, breathing law. Yeah, so therefore, you have just discounted your own self over here, my friend. You have denied your own self over here. Do you get that or not? All I'm saying, this is exactly what I'm saying. That you're trying to just, oh my God, it's just not even this is not even an argument. It is so silly to even talk about. All I'm saying is get in line, get in alignment with universal law and its structure. They created the ecclesiastic structure. We didn't. But we have to follow their ecclesiastic structure to the T. We're not here to take money from people. We are here to help them understand that they didn't have to do this in the first place, that it's all fiction. But it needs to be just counted in a certain way by us upholding the law, not by adding to the ministration. What we're doing is stopping that from happening. Why do you think that you also were told to self-determine?
It's because of that. It's because you needed to determine it for yourself, and then you determined it a certain way and then started telling people your own perception of it. But it doesn't work like that, because everybody has to have an opportunity to do it for themselves according to the structure that is created originally by the person who has the intellectual property, who created it. That is not you. That is not me. That is none of us. That is the first MON. Okay, that is very, very clear. Okay, you don't go and add to whatever she has created or the first MON has created, and then get to say, oh, I did this and my conscience is clear. No, you just added to that whole process. That is what you did. So take responsibility for it, is all I'm saying. I'm not saying that you didn't do anything. Obviously, it's not like you didn't do anything. Oh, we are here connected here for a reason. Otherwise, we would not be here connected. Or is that also an illusion? We have the opportunity to have this in front of 28 lovely people now. It's amazing. Yeah, this is how it is, guys. This is how you get understanding of one another, okay? But don't be under any illusion that the universe does not work according to a certain law. And that is just, it's not, quite frankly, you know what, none of us would want to do any of this, okay? But we have to get ourselves organized, and the structure is specific. It only works that way. It doesn't work any other way. I want to say That's something. See, I really don't want any MON or any human or anyone else to I'm fight not with human, each man. other. I don't want anyone to fight, please. First It's of all, not, it's not about what you see, want. It's about the inner standing that we have to come to with each other. yes, I don't want Yeah, I'm anyone. not, because when I get called arrogant and I get called this and I get called that, man, call me whatever you want. It doesn't make it true. Okay, I'm going to be fine because I literally align with universal law the way it is. See, Okay, but so all I'm हमको saying is that जब everybody else also just align with universal law, and quite frankly, all of those misunderstandings will happen because everybody has their own perception that they bring to the table. But I'm not responsible for everybody else's perception. I'm definitely not responsible for going and fixing it. If you tell me, oh, we're a community and because you have this understanding of it, therefore you must do this and you must do that. No, I don't have any of that. I don't have an obligation to perform for anyone who's not aligned with universal law. I don't have any of that. None of you also have any of it. But all I'm saying is that we can all combine at least in that one thought that this is what is going to bring everyone together. जब Under their मीटिंग हुई correct. थी, Under their correct. जब आपके साथ मीटिंग हुई थी 2 to 3 वीक्स पहले, तो उसमें आपने फेसबुक वाली बात बोली थी, प्लस मैंने टेलीग्राम पे जब आपका लिंक मतलब मैसेज देखा था, okay, I'm not उसके talking बाद about से I'm not हमने talking about 2-3 weeks early. I'm talking about what happened before that, उसके बाद क्या हुआ, it हमने takes सबको फेसबुक पे ही रीडायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद भी अब thank से you हम thank you so much. See, this is what I'm saying. This is what I'm so thankful for, that you guys have you know, of your own volition. I'm sorry to interrupt you, Mr. MON, please. हाँ जी सर जी, हमें बात करनी है आपस में भी, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं. No, this is important because these are the people that you will be in touch with. I can understand it. If we have all understood it and it has been cleared by you, sir. No, which is fine. But if there's some unresolved issues and there's something to be spoken about, I'm sorry that you know, you feel like this is not letting you carry on with your day or night or this meeting or whatever it be. But it's all recorded. We'll send it to you. It's not a problem. But all I'm saying is that these things happen, okay? And they need to be resolved. I just want to say that, sir, we should continue with this. So, but you're determining that for everybody else now. So yeah. It was the natural course. So you're going to determine that for everybody else, is it? Is all I'm saying is that understand this also, because it's very important for everybody to understand this. That there is a specific process that works. It doesn't work any other way. So if you add to the ministration, it's against the law, and no MON is going to stand for it. No MON who's
who is aligned with universal law will stand for it. And all of us are straight shooters, man. You tell me, would you be here if you weren't a straight shooter? If you didn't just tell it as it is? No, you wouldn't, even if it was your perception. Because that's what it is. And we all have to come to a certain point where we all know that the structure that was made works in its way as is created, in no other way. So adding to that in your own perception doesn't work. I'm sorry it has to be like that. I can't do anything about it, okay? Even But we have to do that, I just to be able to thank, stay safe in the system and navigate ourselves through it. And sorry, okay. If anyone I has just any want other to, questions, then go. yeah, sure, Let's I carry on. just, the first thing is that on all of the behalf, I just want to thank you that it has been cleared by your side. Ki what is the meaning, actual meaning of universal law? Community trust is the trust on the humanity, which we all human beings are into it. No, not humanity. Come on. Are you a human? Who said you were a human? I'm a living being. Exactly. We're all living beings who form a community that trust in universal law. And it's not about a commercial trust. It's about the feeling of trust. And trust me, all of these, well, when I say trust me, I mean, like trust universal law, that all of these things are required to get that trust. You know what I'm saying? No, there's only because we want it so bad is the only reason, and we have this connection with one another is the only reason that we would ever even think about, having such a loud discussion about it. It's fine. It doesn't matter. So what? It's about clearing the air. It's about everything, and it's perfect, man. Thank you so much. Thank you so much for being here. It's amazing. Can I raise my question? Sure. See, maximum people here, I think the English is not comfortable with them. So I'll talk in English. मतलब मैंने तो हिंदी में बोला था अभी तक पूरा का पूरा. सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में. कोई बात नहीं, मैं तो पंजाबी में भी बहुत कंफर्टेबल हूँ. पर सर साइड भी पूरी इंग्लिश में ही है, इसलिए किसी का तो हेल्प लेना पड़ेगा ना, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जाने, और आप लोगों में से. कोई बात नहीं. मिस्टर मोहन, मैं ये बताना चाहता था कि फर्स्ट स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया. जहाँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो प्रोटीन मिल बना चुके, उन्होंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है. अब डिपेंड अपॉन द सेकंड स्टेप, तो उसके लिए मेरे को अपने आप को थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा. Few years back, I was very much helpless with my health and everything, and I have come out with all those things. अपनी हेल्थ की वजह से भी मैं ठीक हो चुका हूं, और मैं इस सिस्टम से भी दूर होना चाहता था. उसकी वजह से मैंने अपनी सारी लायबिलिटी उतार दी, और मुझे ऐसा फीलिंग है पर्सनल कि मैं पिछले 2-3 साल से एक काइंडनेस से ही जी रहा हूं. आई एम जस्ट हेल्पिंग पीपल विथ नो एनी अदर माय पर्सनल नीड्स एक्सेप्ट द फूड. तो if I am having some saving for myself, for my future, so that is the only thing which I can give to the kindness credit to the ULC form. भरने के टाइम पे मैं जो भी है वही एक दे सकता हूँ. I cannot give anything monthly except my kindness, क्योंकि अब तो मैं इतना ज्यादा वो हो चुका हूँ कि मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि if you want to provide me lunch, I will work for you. I don't want money because I hate the money the most. नहीं, बट आप कल वो फिर ओके, मैं फिर से समझा रहा हूँ एक चीज कि जो आप 10% दोगे, अगर आप दे सकते हो तो दीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो ट्रस्ट से बाहर नहीं निकाल देंगे. बस ये मैं कह रहा हूँ कि जो आप अपना बिजली और पानी और जो यूटिलिटीज को जो डेट्स हैं, वो डेट्स होते हैं. डेट लुक्स द सेम फॉर एवरीबडी. किसी का डेट अलग नहीं है. आपका डेट अलग फॉर्म में आया होगा, पर वो डेट ही है. मेंटल डेट हो या फाइनेंशियल डेट हो या फिजिकल डेट हो, जो भी हो, सारा का सारा डेट है. ठीक है? इट्स ऑल टैक्स. इट्स ऑल बिकॉज़ you've been so taxed. बट जो ठीक है, अगर आपके पास कोई लायबिलिटीज नहीं है, जो आपके पास यूटिलिटीज हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी नहीं, हो मैं नहीं गया, करता हूँ. मैं नहीं करता हूँ. तो फिर परफेक्ट. आप बस केसी फॉर्म भर दीजिए जैसा भी है, और आप उसमें लिख दीजिए जो भी आपको सही लगता है. उसके हिसाब से फिर एटलीस्ट आई कैन सेंड यू द वेलकम पैक. When I send you the welcome pack, then you can start using your MON ID and
then we can start, that is what the community pot is there for people who are going to exemplify. But I have to pay something to No, you don't inform. have to pay no, you don't have to. You don't have to pay anything. It is whatever you were whatever you were paying to the system. Okay. Whatever you're paying to the system. No, I'm paying nothing to the system. So then if you're paying nothing, then you are discharging nothing, and therefore you don't have to contribute anything, right? The 10% I may be having my dead identity, but मैं उसको यूज ही नहीं करना चाहता हूँ. तो ठीक है, इसलिए मिनिस्टर एमओवेन इसलिए है आपके लिए, और फिर आप एग्जाम्पलीफाई करिए, अपहोल्ड द लॉ. अगर आपके पास गाड़ी है तो एनी केस वो सब प्रोसेस दिया, वो पहले 10 स्टेप्स जो है ना, वो वेबसाइट के ऊपर जो दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले 10 स्टेप्स पे आप 1 2 3 4 5 to 10 करके just after that see, because you have to exemplify it. जब आप exemplify कर दोगे, करूंगा, but ये सेकंड स्टेप ही था ना जहाँ मैं अटक रहा था, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा. कोई नहीं. See, that's what I'm saying. It's not a prerequisite or anything. It's just that if you have that debt to discharge, then you have that 10, then you're going to save that amount that you were paying to the system, and out of that 10% you just give to the community, is all we're saying. And the last you put in the community pot under your account for your usage later, or for the community's usage later, and your permission will be taken for everything. It's not like we're going to spend it on something else without telling you, but it's for people who exemplify. It's for on ground. It doesn't, it's quite frankly zero. 10% of zero is still zero. So if you don't have any debts or liabilities, then there's nothing. I don't have any liability, but I am having a little saving. It's like that only. That also I am using to give donation to people. Seriously telling you. That's what I'm saying. That is yours from the energy that you have spent to earn it. That's your energy. We don't want your energy. We want to clean your energy and free your energy. So you have that. So you have all your time free, so that the concept of time doesn't exist for you anymore. Again, that energy is a fraud money, no? No, your energy can't be fraud money. Your energy is pure. You convert it into that by using their fiat currency, which is what at the point of sale we get you to stop doing, is to be tax free, because the tax is only levied upon the currency that you use because of the use of usury of fiat. That is why you are taxed, because you use their currency that you don't have a right of use of. And that is where kindness credits comes in at the point of sale, because you're the bank. There's a video on MOVN channel that you can watch. It's called Kindness Credits versus Crypto. Watch that video, and it explains to you how you exchange your money at the point of sale, because now you are the bank. You are the government, you are the bank, you are everything for yourself. That's it. And so nobody can tax you. Why? Because, well, the universe didn't tax me, so who are you to do that? Okay, got it. Thanks a lot. Anybody else? जी सर. हाँ जी. जी सर, मेरे को ये जानना था कि मैंने प्रोटोन आईडी बना ली. इसमें मतलब आप लोग बोल रहे हो कि स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. हाँ जी. तो अब स्टेप 2 में क्या करना है? उसी के नीचे, स्टेप 1 के नीचे ना स्टेप 2 लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर. हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि ऐड द इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट नंबर एंड अमाउंट यू आर सेलिंग, प्रेस असाइन माय कंसेंट. तो उस पेज के जब नीचे जाओगे ना, हाँ, when you go वेबसाइट के बिल्कुल नीचे तक चले जाओ, वहां पे लीगल फिक्शन, प्रोटॉन ईमेल आईडी, कॉर्पोरेशंस दैट आर जिसके अकाउंट नंबर्स भरने हैं, जो कॉर्पोरेशंस आपके लीगल फिक्शन को लॉन्डर कर रहे हैं, वो अपना एड्रेस भरिए अपने यूटिलिटीज के लिए डिस्चार्ज करने के लिए, और प्रेस सेंड. अनडॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स में नहीं, मेन पेज पे जाइए. मेन पेज पे जाऊं, होम में जाऊंगा. हाँ जी. और उसके एनी केस सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये सब आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, बिकॉज़ हाँ, लीगल फिक्शन आ गया. हाँ, तो लीगल फिक्शन, प्रोटॉन ईमेल आईडी, जो भी वहाँ लिखा हुआ है वो सब भर दीजिए और सेंड प्रेस कर दीजिए.
अपना लीगल फिक्शन, अपना प्रोटॉन ईमेल आईडी, अपने जो भी कॉरपोरेशंस आपके सर प्रोटोन ईमेल आईडी तो मैंने भर दी है, ये लीगल फिक्शन में क्या बनना है, मतलब थोड़ा समझाओ सर। लीगल फिक्शन मतलब आपके आधार कार्ड के ऊपर या आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम जो लिखा हुआ है, अच्छा आप जो अच्छा, तो सोचते ना, हो कि आपका नाम है, अच्छा ठीक है वो सर। उसको लीगल फिक्शन बुलाते हैं। वो क्योंकि पेपर के ऊपर है ना, तो फिक्शन है वो लीगल, इसलिए तो आपको लीगल कॉन्स्ट्रक्ट में फंसा के रखा हुआ है। स्टैट्यूट्स ठीक एंड है। एक्ट्स क्या है? स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स लीगल फिक्शंस के लिए होते हैं, और लीगल फिक्शंस होती है कॉरपोरेशन। तो वो जो स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव रूल्स हैं, सिर्फ कॉरपोरेशंस के ऊपर लागू हो सकती हैं, आपके ऊपर नहीं। पर अगर आप ठीक है। बोल देते हो कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, तो हम्म। आपने कंसेंट दे दिया ना अपना, सही है। आपने क्लेम मार दिया है। वो सही है। इस्तेमाल, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि आप हो ही नहीं, आप मुर्दे थोड़े ना हो, आप तो ना जिंदा हो। सही, तो फिर लिविंग बीइंग। सो द लीगल फिक्शन, द प्रोटॉन ईमेल आईडी, द कॉरपोरेशंस, जितने भी कॉरपोरेशंस के आपके लीगल फिक्शन के साथ अटैच्ड हैं, जिसमें वो डील कर रहे हैं, उसके नीचे आपका एड्रेस मांगेगा, एड्रेस लिख उसमें लीजिए। अब और ये बोलता है एंटर अकाउंट नंबर एंड कॉर्पोरेशन हाँ, टाइटल वही ईयर। वही मैं कह रहा हूँ, वो आप सब खुद अपने लिए डिटर्मिन करो। ठीक है, मैंने एक तरीके से किया था, मैंने आपको बता दिया वो क्या तरीका है, बाकी आप खुद अपने लिए डिटर्मिन करो, और आप बस भेज दो, जैसा भी नहीं है आप भेज दो करके अपनी समझ से। और ठीक है जब, और अगर आपको कुछ बताना होगा तो हम आपको डायरेक्टली बताएंगे, फिर ईमेल से। तो अकाउंट नंबर में मेरा मतलब आधार कार्ड नंबर डालूं या फिर जो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है वो डालूं? जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपको सही लगे, आप ठीक है, करके तो देखो, तो फिर आप करके तो ठीक है। देखो। ठीक है। द प्रोसेस विल रिवील इटसेल्फ, उस प्रोसेस सारा का सारा आपके सामने निकल के आ जाएगा। और आप वीडियोस देखो, बहुत सारे वीडियोस है जो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं दोबारा दोबारा। मतलब वो हिंदी के सबटाइटल्स आप कर लीजिए, अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं आई थिंक उसके हिंदी के सबटाइटल्स आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो प्लीज हमें बताइए, फिर हम एमओवेन को बता सकते हैं कि उसमें हिंदी के सबटाइटल्स डाल दे प्लीज। या तो हमारे पास कोई हिंदी। है, या तो हमारे पास कोई है वो करने के लिए, कि उन्हीं के वो जो यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं ऑलरेडी, उन्हीं के सबटाइटल्स करके हम अपलोड कर देते हैं फिर से। या तो मैं एमओवेन को तो पूछ लूंगा कि वो सबटाइटल्स ही हिंदी में कर दें। पर हमें मालूम जो तो भी होना मतलब, चाहिए ना कि जी सही। किसको प्रॉब्लम आ रही है। आप या तो जो आप वीडियो देखना चाहते हो उसके नीचे आप लिख हम्म। दीजिए, आप फीडबैक तो दे ठीक है। दीजिए ना। और फिर डायरेक्टली ठीक है। यूएलसीटी को फीडबैक जाएगा ना वो वाला। फिर हम्म। इसके थ्रू उसके थ्रू उसके थ्रू उसके थ्रू नहीं होते हुए जाएगा, डायरेक्टली वहां जाएगा। और ठीक वो है। बेस्ट होता है, वो डायरेक्टली आप उनके साथ डील करिए जो जिन्होंने वीडियो अपलोड किया है। हम्म। उनको बता दोगे तो वो आपके लिए हम श्योर कर लेंगे, या तो आपको बता देंगे कि कैसे ठीक। करना है। हेलो। हाँ ठीक है जी, सर, मैं मतलब कमेंट छोड़ दूंगा उसमें, ठीक है। या गो फॉर इट। हेलो। थैंक यू। हाँ जी रॉबिन। I have 5 questions, which is outside from universal law. Please don't Uh, do this. huh? Why we would, okay, what is it? Maybe you can answer. So, can I ask? But what are we going to do talking about fiction? No, about the upcoming fear mongering. I just want to clear something. This is a, we don't connect with the energy of fear over here. This is Yeah, a but this I is need. this is a place for remedy. So we, in the welcome kit, it rebuts the presumption that there is coronavirus, that you are coronavirus, okay, or it rebuts the presumption of a virus. No, I don't In the believe in corona. I know no, this. no, This is something. I'm just saying, Huh. because whatever's in the welcome pack rebuts everything the system has to throw at you, all the fear. No. Yeah, but can I ask? Sure, go for it. Sure. So my question was, is the upcoming 5G dangerous radiation gonna happen? It's already happened. How do you know it already hasn't? I mean, it was like people are falling on street because of that radiation, but it hasn't happened yet.
It probably has. It just didn't affect you, maybe. I don't know. And I can't answer any of that because I'm not. I don't give my energy to that. I just know that it's around. I just know that it's in your phone that you use. I know it's in all your communications. I answer to this question? yeah, sure. Yeah, so whatever the effects may be, the thing is that if you fear it, then the negative consequences will be more than what it actually can do. We do know that it is unnecessary and not required, so इसको हटा देंगे, but then fear won't help. If you don't Because if you don't connect with the energy, it doesn't exist. You are a transmitter. You know, you're a biological transmitter. Your cells resonate to any energy that you give it. What energy do you want to create? You want to connect with the energy of fear and terror? Then you're going to connect with all the energy of the 5G radiation and all of that. And it's going to have an adverse effect on your mind and then on your body. And then, at least that's the way I look at it. So I just don't connect with it. I connect with the remedy. I connect with, like for me, the Om is the sound of creation. So, and you're 70% water.